प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की पहल की थी। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तब से पूरी दुनिया योग के मार्ग पर अग्रसर है। आज हम योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। आइए योग को अपनाएं, अपने जीवन की एक शैली बनाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट के लिए, हमारे सारे अतिथिगणों के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी, माइक हैंडओवर करना चाहूंगी डॉक्टर राघवेंद्र राव जी को, डायरेक्टर CCRYN। हमारे प्यारे राघवेंद्र जी, जोरदार तालियां सर के लिए और सर की पूरी टीम के लिए जिसने पूरी निष्ठा के साथ काम किया और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। आपके सामने है सर, आई हैंड ओवर द माइक टू यू। फेलिसिटेशन करेंगे हमारे गेस्ट का बुके, शॉल और मोमेंटो के साथ। सर जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट के लिए। हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। आप आए। मोमेंटो, बुके और शॉल के साथ ये हमारा प्यार भरा व्यवहार है आपके साथ कि जब हम प्यार से आपको बुलाते हैं आप जरूर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आप आए, अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला, हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद आपका। देखिए, आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा उत्साह जो है वो बना रहता है। स्वामी रामदेव महाराज जी फेलिसिटेट कर रहे हैं सर। धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। To witness this beautiful brand and grand event of celebrating 10 years of International Yoga Day all across the world. श्री चैतन्य सरस्वती जी, चिदानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए यहाँ पर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती हंसा जी योगेंद्र का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्यार भरा आपका साथ है जो हमें हर साल दर साल आगे लेकर जाता है, एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ। जोरदार तालियां सर का।
हमारे साथ होने के लिए, वक्त बिताने के लिए। धन्यवाद सर, आप आए। ये प्रेम स्वरूप मोमेंटो जो है, ये एक यादगार है आज के दिन का, जब हम आपके साथ वक्त बिता रहे हैं यहाँ पर सभी योगा प्रेमियों के साथ। श्रीमती मोनालिसा दास जी, जोरदार तालियां आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे डिग्निटरीज को, जो इस खास मौके को और भी स्पेशल बना रहे हैं अपने प्रेजेंस से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। The theme Yoga for One Earth, One Health beautifully aligns with the idea of holistic well-being for both humanity and the planet. Yoga for One Earth, One Health. Yoga is more than just a physical practice. It is a way of life that fosters harmony between the body, mind, and environment. The theme One Earth, One Health reminds us that our health is deeply connected to the health of the planet. By practicing yoga, we nurture personal well-being, support a sustainable lifestyle, create global harmony. This International Yoga Day, let's commit to inner balance and outer harmony. हमने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और इस सेलिब्रेशन को आगे ले जाने के लिए ये जो हम सब इकट्ठे हुए हैं एक मिशन और एक विजन के साथ, इसे आगे ले जाने से पहले हम 2 मिनट का साइलेंस, मौन ऑब्जर्व करेंगे। और आप जानते हैं ये साइलेंस हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मौन हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें जितने लोगों की जान गई, उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए हम 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे रखें। कुछ देर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, हंसी खुशी के क्षण जो मृत्यु में बदल गए, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं भावभीनी।
अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब हम अपने कुछ बच्चों को यहां पर बुलाना चाहेंगे वैदिक चैंटिंग शांति मंत्र के लिए। रमेश कौशिक जी, श्रीनिवास वैदिक पाठशाला के छात्र और उनकी सारी टीम को हम यहां पर बुलाना चाहेंगे एक शुभ मंत्रोच्चारण से इस इवेंट की शुरुआत करते हुए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ओम्। शन्नो मित्राः शं वरुणः सन्नो भवत वर्चमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुर्करामः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्तुष्ट्वा गोसस्तानो विर्व्यासे माहि देवाहि तन्यादायो। हरिः ओम्। सुशान्तिर्भवतु। शांति मंत्र के बाद हम दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ेंगे। Right now, I must tell very proudly that today over 300 million people worldwide practice yoga regularly. And the global yoga industry values at present $115 billion, and it is projected to reach $273 billion by 2034. So scope is immense for all of us. Various studies have also revealed that around 11.8% of our population practice yoga regularly. Global yoga studies and meditation research have grown impressively in the due course of time.
The world's leading health institutions have validated that our rishis and munis knew thousands of years ago that yoga is an important tool for both physical, mental, and spiritual growth. By now, the world has realized that the health of humans, animals, and the environment are interconnected. But I must proudly say that in our Indian culture, we believe in Vasundhaiva Kutumbakam. The principle meaning the world is one family. So we have all the time grown, taking all these three aspects into account together. So it's a philosophy emphasizing the interconnectedness of all beings and promoting global harmony and unity. This year's theme, Yoga for One Earth and One Health, beautifully aligns with this concept of India. I would like to highlight the major plans of this summit is we'll be launching the Yoga Prabhav report that is aimed at showcasing the transformative impact of the observation of International Day of Yoga over the past 10 years. Release of e-book highlighting the IDY celebration over the last decade, a book on Bharatiya Vriksha Vaibhavam, and a report of Pehle India, and the release of yoga therapy videos as part of Yoga Samavesh by CCRYN. Once again, I welcome all the speakers who have come online and offline for this event across the globe, and all the delegates, both national and international, for participating in this event. I am sure today's deliberation will lead to transformative ideas towards development of this science yoga. Thank you. So much, ma'am, for highlighting the key points of today's event and welcoming everybody. Now, I would request our next guest, Shri Chidanand Saraswati Ji Maharaj, Spiritual Head, Parmarth Niketan Ashram, to address the gathering. Sarvamangalmangalye Shive Sarvarthasadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Asato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti
Most respected, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, honorable ministers, a very dedicated, very committed to this great cause and the nation. Our honorable minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, honorable minister, Shri Pratap Rao Jadhav ji, and the very dedicated secretary to the Ayush department, Shri Rajesh Vaidya Kotecha ji, Vaidya Rajesh Kotecha ji, or Matri Shakti, who has shown the world yoga is the way. Our Adaniya Hansa ji, our Subodh Tiwari ji, Monalisa Das ji, our Raghavendra Rao ji, and the MC. All the beautiful divine yogis, yoga lovers, all the yoga teachers, and the yoga seekers. It's so beautiful to be here today. We are not merely gathered here. We are together here in the name of yoga, in the name of peace, in the name of harmony. And we are together here today to give the world a very clear and bold message. Yuddha is not the way, yoga is the way. Yuddha is not the way. We can see the pieces everywhere. What is happening all over the world? Maybe many reasons are there. Always reasons are there. But we have to see all these wars are bringing peace, are turning our world to pieces. Yoga is the way because yoga never creates pieces. Even you are in pieces, brings you back into the peace because peace is the way. Peace. And if you are in pieces, what you share? Only pieces. That's why peace is very important. And this is our choice. Yoga gives you that choice. You want to live in peace or in pieces. That's why our Honorable Prime Minister of India, Yashasvi Tapasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, when he went to the United Nations, I remember I was there in the United States. And the first time, no hesitation that I am speaking in Hindi, no hesitation that I am talking about my own culture. Today we are living in the AI age, artificial intelligence age. We are very proud of it. Okay, great. At the same time, in the advancement, this AI is going to replace so many people. They will be jobless. But our rishis gave a vision which will make nobody jobless. Whatever the job you are doing, you can feel vibrant, radiant. You can recharge every day yourself through yoga. And the AI, our rishis gave in beautiful way, AI to RI. The yoga is turning from AI to RI, or building the bridge between the AI and RI, artificial intelligence to Rishi's intelligence. Rishi's intelligence. This is Rishi's intelligence. That's our Honorable Prime Minister of India. When he went to the United Nations, immediately, without bringing any other agenda, without even bringing India talking about anything, he said, let me take one thing in their minds, yoga, and India will be there. And today you see, yoga is everywhere. Yoga is everywhere. And yoga means oneness. One man, one mission, yoga. And yoga means awareness. Yoga means union. Yoga means oneness, togetherness, inclusiveness. That's what power of yoga is. Includes all, excludes none. That's what yoga is, which is very scientific. Subodhji knows, he's working on this direction. Swamiji is day and night, 24/7, always there, 3 o'clock to 10 o'clock.
Yoga, yoga, yoga. Why yoga? Because yoga is for all. As sun, moon, stars, air and water is for everyone. Yoga is for everyone and yoga is for all. Yoga is scientific. Yoga is beyond religions. Yoga is beyond religions. इसलिए योग की जरूरत है. When we are talking about one, and today when I see the people, it makes me very much in pain. Creates a very painful situation when people are online all the time. Everybody, you know how many mobiles we have in our nation? 124 crore mobiles. 120 crores mobiles and 4 crores landline connection. Total is 124 crores. It means everybody is online. No problem. Be online. But don't forget, being online is not enough. But you have to be aligned to yourself, to your dear and near ones. That connection is gone. And yoga provides that connection. Yoga tells you how to be online, yes, but how to bridge in online and how to become aligned. Both you need it. Both are connection. Internet, great. Be on internet. Gives you the speed to the world. But disconnect to yourself to the others. आज सभी लोग फोन पे हैं, 5 लोग कार में होते हैं. शेखावत जी, मजे की बात है, 5 लोग कार में हैं, पूरे वर्ल्ड से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. Yoga tells you, scroll 5 times a day. Doesn't matter. Keep scrolling. But at least one time go to your soul also. Yoga gives you the connection between the scroll and the soul that you should not forget. ये बहुत जरूरी है. अगर हम इसको भूल जाते हैं तो समझिए सौदा घाटे का होगा. 51% कॉर्पोरेट्स, ये 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, आर फेसिंग क्या? डिप्रेशन. 51% is an amazing number. That's why yoga is very important. इसलिए योगा इज द वे. मुझे तो लगता है मोर मेडिटेशन, लेस मेडिकेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन अर्थ एंड वन हेल्थ, वन अर्थ का मतलब है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि मद अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर मदर अर्थ. उसका भी ध्यान रखना है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वन हेल्थ इज नॉट माई हेल्थ. If this is my health, we are very selfish. It's not my health, it's the health of all. We never talk about my health, our human beings. We talk about the living beings. When we are talking about the relation between the human beings and the living beings, you need yoga. क्योंकि वनस्पति हो, मनुष्य हो, पशु हो, प्रकृति हो, इन सब के बीच में अगर तालमेल नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, एकता नहीं होगी, तो पक्का मानिए यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर बी हेल्दी. संबंध टूटा, बस उस संबंधों को जोड़ता है योग. जब आप भीतर की यात्रा करते हैं तो ये सारे संबंध जुड़ जाते हैं. इंटरनेट की यात्रा आपको स्पीड पे ले जा सकती है, लेकिन इंटरनेट इज नीडेड फॉर योरसेल्फ. लेट अस connect between internet and internet, and that is called yoga. जो आपको दोनों से जोड़ के रखता है, जो आप सबको, किसी को छोड़ के नहीं रखता है, सबको जोड़ के रखता है, सबको साथ लेके चलता है. जो सबको साथ लेके चले वही तो भारत है. और उस भारत के लिए योग और ध्यान, जिसने भीतर की दृष्टि दी, अंदर की दृष्टि दी, भीतर नहीं संभला, आज सबसे जुड़ गए लेकिन भीतर से कट गए. लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन. उस कनेक्शन को अगर कोई दे सकता है, हाँ, योग आज पैसा भी देने लगा है. पीपल आर बीइंग वेरी रिच, बट इट्स नॉट द ओनली एम. Yoga was not for collection, yoga was for connection. And that connection, because yoga is union. अगर हम पूरा कर सके, all our conferences, all these efforts our honorable ministers is doing and our India is doing, believe me, will take people in such a great height. और वो जब होगा तो समझना कि योग हो रहा है. Last but not the least, all the yogis, you people, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम.
I think we need a green yoga and green yogis. ग्रीन योगा, ग्रीन योगीज, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती के नाम और एक पेड़ अपने नाम, कुछ तो करें हम लोग। अगर आपने ये काम किया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, धरती भी हरी भरी रहेगी, जीवन भी हरा भरा रहेगा और हम सब मिलकर पूरे विश्व के लिए एक नया भारत, एक नया विश्व दे सकते हैं। भारत माता की जय, वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चिदानंद सरस्वती महाराज जी का, जिन्होंने युद्ध इज नॉट द वे बट योगा इज द वे का नारा दिया, पीस इज द वे विच इज पैरामाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती हंसा जी योगेंद्र, जो हेड हैं द योगा इंस्टीट्यूट एंड प्रेसिडेंट इंडियन योगा एसोसिएशन के। मैं चाहूंगी कि वो आए और 2 शब्द हमसे साझा करें। सबको एक बारी प्रणाम आप सबको, और प्रणाम हमारे सारे योगा एंथुजियास्ट को। बात यही है कि योग, जैसे शेखावत जी ने कहा, योग करने का विषय नहीं है, योग को अपने जीवन में आत्मसात करने का विषय है। योग में जीवन जीना है। सवेरे जैसे ही हम उठते हैं, ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर है, सत्य है, याद करना ज़रूरी है। और उसके बाद एक लंबी सांस लेना ज़रूरी है। जो ईश्वर ने प्रकृति दी है उसको अंदर आत्मसात करना ज़रूरी है, और ये हमें आदत में आ जानी चाहिए। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो ही जाता है। जीवन में योग को इस तरह आत्मसात करना है, सवेरे से रात तक हम जो भी कर रहे हैं वो योगमय ढंग से करें। यानी कोई भी कार्य करें सोच के करें, यूं ही नहीं कर डालें, रिएक्शन तो कभी ना करें। जीवन को बुद्धि, इंटेलेक्ट और भावना दोनों को जोड़ के करना है। एक बात आती है, गार्गी माता गार्गी सीता मैया के पास गई, उनके साथ शास्त्रार्थ कर रही थी, और उन्होंने कहा, सीता ये बताओ कि इतने सारे ये शस्त्र हैं, शिव जी महाराज का पशुपतास्त्र, कृष्ण के चक्र और ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, ये सारे शस्त्र हैं, उसमें कौन सा शस्त्र सबसे स्ट्रांग है? तो सीता ने कहा, करुणास्त्र। उन्होंने कहा, ये करुणा का अस्त्र क्या होता है? तो उन्होंने कहा, जब एक इंसान के अंदर करुणा है, कंपैशन है, दया है, दूसरों के दुख को समझने की शक्ति है, दूसरों के बारे में सोचने की ताकत है, उसके लिए कुछ करने का सोचते हैं, तब फिर वो इंसान आपका बन जाता है, फिर शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसीलिए आज जो देश में जरूरी है वो है ये भाव, करुणा का भाव। लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? अभी ही हमारे पास द योगा इंस्टीट्यूट में वहाँ के लोग आए जहाँ बॉम्ब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी, यूक्रेन के एम्बेसडर आए हमारे पास, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि हर क्षण पता ही नहीं है कब कहाँ से बॉम्ब गिरे। और उन्होंने हमारे दिल्ली के सेंटर से, जहाँ शेषपाल जी हैं, वहाँ उन्होंने योग सीखा, और उन्हें पता लगा कि योग में इतनी शक्ति है कि ये सब जगह बॉम्ब भले गिर रहे हो, लेकिन आप अपने मन को सही स्थिति में रख सकते हो। आप डर के नहीं जी सकते, आपको हिम्मत के साथ जीना है, और आप में ये ताकत आ ही जाएगी अगर आप योग को जीवन में अपनाओगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश में आके हमें योग सिखाइए प्लीज। अब
यही बात हम रशिया से भी कर सकते हैं, यही बात सबसे कर सकते हैं कि प्राणी मात्र के लिए योग है। योग अगर हर व्यक्ति सीख ले तो कभी ना तो लड़ाई होगी, नहीं एक दूसरे को नीचे गिराना होगा, ये अहंकार तो बीच में आएगा ही नहीं, सब प्यार से रह पाएंगे। क्योंकि योग शास्त्र में ही कहा है, ये सारे शब्द मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। हमारा चित्त तभी सही होगा जब हमारे अंदर ये भावनाएं होंगी। इसलिए हमें ये भावना लानी है, स्वार्थी नहीं बन रहा है। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, सब अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, पास में कोई खड़ा है तो स्माइल तक नहीं कर पाते। एक लिफ्ट में दो चढ़ रहे हैं तो सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। मैं कहती हूँ कि एक दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, कि कम से कम उस समय मोबाइल रख लें, जब कोई है साथ में तो कम से कम स्माइल तो करें उसको देख के, कम से कम उसको अभिवादन तो करें। मगर वो नहीं हो रहा आजकल, सब अपने में ही बिजी है। और इसीलिए हम थोड़ा यहाँ से अलग हटें। ये कल्चर बहुत गलत कल्चर है, इसमें नुकसान ही नुकसान है। और इसीलिए कोशिश ये की जाए कि हम मिलकर चलें। योग का अर्थ है जुड़ना, मिलना, और हम सब मिल के आगे बढ़ें। तो बस बहुत कुछ कहा है और आप बहुत कुछ सुनेंगे भी, लेकिन यही याद रखना है कि मैं खुद के लिए तो सही समय निकालूं। बहुत समय नहीं निकालना पड़ता स्वस्थ रहने के लिए। लेट मी टेल यू, अगर जीवन में आत्मसात कर लिया ना योग को, तो अलग से ज़्यादा समय नहीं निकालना पड़ता। आपका समय फिर दूसरों के लिए काम आता है, आप दूसरों के लिए जीते हो। और इसीलिए योग इंस्टीट्यूट में हम बार बार ये स्लोगन बोलते हैं कि योगा फॉर हाउस होल्डर्स, जिनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, माँ बाप को संभालना है, भाई बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है, नेशन को संभालना है, और ये साधु सन्यासियों को भी संभालना है। गृहस्थी सबको संभालते हैं, और इसीलिए उनको कैसे अपने आप को सही रखना आना चाहिए। और इसीलिए योग को अपने जीवन में लाइए। हर क्षण योगमय हो जाए तो बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। बस यही कहना था। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने करुणा के शस्त्र को सबसे बलवान बताया। कंपैशन इज द मोस्ट रेलेवेंट इमोशन। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री सुबोध तिवारी जी हमारे साथ अब अपने कुछ दो शब्द साझा करेंगे। सीईओ कैवल्य धाम, जोरदार तालियां। सेक्रेटरी जनरल IYA। सभी को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी योग के परिवारजन, दो शब्दों के बजाय मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। It is a pleasure to be here in this event during the Yoga Connect, which joins the global community of yoga. We come together to celebrate the universal language of yoga. As we practice, let's remember that yoga transcends borders, cultures, and backgrounds. Let's foster global connect among yoga fraternity, sharing knowledge, wisdom, and practices. Together, we can promote peace, harmony, and well-being worldwide. Let's breathe, move, and unite as one yoga community. As the Secretary General of the Indian Yoga Association, I'm happy that the association is on the front of joining the variety of traditions and lineages and uniting all of them. And we are happy to join and collaborate in this momentous occasion. I would also take this opportunity to congratulate the Ministry of Ayush for conceptualizing this International Day of Yoga in a very, very beautiful manner, in which we are celebrating through various dimensions. And this program today, Yoga Connect, is going to be very interesting
It gives various dimensions of the progress in various fields. So I am so happy all of us are here, and we will take our learnings forward and again connect the yoga fraternity together. Thank you. Dhanyavad. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने योगा कनेक्ट जो आज का हमारा पर्पस है मिलने का, उसको आपने हाईलाइट किया। अब जिस क्षण का आप सभी को इंतजार है, स्वामी रामदेव महाराज जी जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको सुनने का, उनसे जो ज्ञान गंगा बह रही है उसे अपने अंदर आत्मसात करने का, तो मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को बोले भारत माता की जय। कुछ समाधि में तो नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। जरा हाथ उठा के वंदे। ऐसा लगा है कि अब आपके हाथ ठीक ठाक हैं, फ्रोजन शोल्डर नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं। योग से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली सब प्रकार से हम फिट रहते हैं। अथ योगानुशासनम पहला ही सूत्र है। योगानुशासनम के दो अर्थ हैं। एक तो योग का अनुशासन जो युगों युगों से चला आया, अनादिकाल से योग चला आया है और उसका हम अनुशासन कर रहे हैं। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, चित्त चेतना, आत्मा का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र आचरण का परिष्कार, संस्कार, अनुशासन। और हमको जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन माता हंसा जी करी थी, योग बोलने का विषय नहीं, सच में योग जीने का विषय है। हम खड़े हो तो हमारे पूरे व्यक्तित्व से योग अभिव्यक्त होना चाहिए, हमारी दृष्टि से, हमारे आचरण से, हमारे कर्तृत्व से, वक्तृत्व से, नेतृत्व से, जीवन से। और हम देश के प्रधानमंत्री में योग क्या होता है, एक योगी योद्धा, एक राष्ट्र ऋषि हम अपने प्रधानमंत्री के अंदर देखते हैं। उनको प्रथम तो बहुत प्रणाम है उनकी इस दृष्टि को कि उन्होंने योग को वैश्विक पटल पर वो गौरव दिलाया, ऋषियों की वो विरासत। योग जो पूरे विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, जिसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं, लाखों करोड़ का बजट खर्च होता है, लेकिन योग से पूरी दुनिया को हम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली दे सकते। इतना बड़ा तत्व है योग, जीने का तत्व है। हम योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को हम जिए, ये है योग। और अब हम इसको व्यवहारिक धरातल पर देखें तो दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं आने वाले 5 वर्षों में 500 करोड़ लोग योग करते हो जाएं दुनिया के, और होगा। अब जिसको देखो आधी दुनिया मोटी है, कुछ पतली है, कुछ बीच में लटक रही है। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है, बच्चे जो है बोले तो ना समझ हैं, जवानों में होश नहीं है और बुढ़ापा आके जाता नहीं है। लोग घर बनाते हैं तब तक खुद से बेघर हो जाते हैं, अपना घर उजड़ जाता है। बाल उजड़ गए, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, घी खाया नहीं जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोई क्या हालत क्या हो गई? आदमी घर बनाया, खुद से बेघर हो गया, गाड़ी आई, अपनी गाड़ी पंचर हो रखी है, चला नहीं जाता, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। मेरी कोशिश होगी कि जैसे तुमने स्वामी रामदेव को 30 साल पहले देखा, आप 100 साल के स्वामी रामदेव को ऐसे देख सके। योगी के रोम रोम से योग अभिव्यक्त हो। अब हमको लोग देखते हैं, अरे बोले बाबा जी आपका तो पेट अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। बोले इसको घुमाने के लिए अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना पड़ता है। 2 इंच की जीभ ने हर जीव को परेशान कर रखा है, जिसको देखो वही ठोके जा रहा है। अरे थोड़ा थामा, मराठी में, हरियाणा में बोला रहा भाई डट जा थोड़ा। बहुत कसूता हो रखा है मानस, इसका मन काबू में नहीं है, न तन ठीक है न मन ठीक है। आत्मा तो 7 ताले भीतर बंद कर रखी है,
बेराए को निकड़े बंद हो रखी है। योग हमें अपने समग्र अस्तित्व से जोड़ता है। पिंड में ब्रह्मांड का सामर्थ्य है, पिंड में ब्रह्मांड अंतर्निहित है, उसको कैसे जाने, कैसे जगाएं, अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, ये योग। तो आज हम यहां सच में भाषण देने तो नहीं आए, हमको बोला कि स्वामी जी आना है, तो मैंने कहा करना क्या है, बोले बस आना है, तो हम आ गए। थोड़ी औपचारिकता इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं, बाकी तो हम अपने जादव साहब को आशीर्वाद देने, एक बार जोरदार अभिनंदन प्रताप, बड़े प्रतापी। और शेखावत साहब तो साहब ये तो मारा मामा ना गया, हमारी माता जी राजस्थान दी माई को भांजो, और मारा ठाडा मामा जी है, योगी है, ना चीनी खाते, एक बार आहार लेते हैं, रोज योग करते हैं। इनकी पूजा माता जी भी योग करती थी, और मेरे को भी याद दिलाया तो मेरे को याद है, हाँ भाई मिले तो थे 20 साल पहले पुणे में, ढूंढते ढूंढते हम इनको मिल गए। कितने अच्छी आत्मा यहाँ आज है मंच पर, और उनका भी जो डिपार्टमेंट है कल्चर एंड टूरिज्म, तो साहब कल्चर और टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हम ही हैं। तो कल्चर और टूरिज्म तो हमारे साथ साथ चलता है, और आयुष मंत्रालय वो तो हमने रोम रोम में बसा रखा है साहब, और उससे आयुष्य मिलेगा सबको। ये कोटेचा साहब जितनी उम्र बढ़ रही है उतने ऐसे लग रहा है भी कॉलेज से निकल करके आए, चेहरे पर कितना तेज है, और इन्होंने 1 ग्राम भी वजन बढ़ने नहीं दिया, जोरदार अभिनंदन है इनका भी। और हमारे राघवेंद्र जी तो वो तो स्वयं राघव के ही अवतार जैसे दिख रहे हैं, प्रणाम है। और हंसा जी तो ऐसे है कि जैसे सारे हंस जैसे मोती चुनते तो जीवन के सारे मोती उन्होंने चुन लिया है, ऐसे हमारे सारे गेस्टों का अभिनंदन है एक बार। और ये तिवारी जी, ये 3 वेद पढ़े हुए हैं। हाँ, अब ये मुझे ना पता नहीं कि इनको याद है या नहीं, मुझे पता है, लेकिन बहुत अच्छे योगी है, जोरदार अभिनंदन है मोनालिसा जी के लिए। आप सबके लिए कितने अच्छे अच्छे योगी हैं साहब, आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है आप भी योग से एंटी एजिंग पा लिए हो, लॉन्गेविटी पा लिए। अब जिसके चेहरे मुरझाए मुरझाए से, कुछ योगी ऐसे जैसे उनको देख के लगता है शायद डिप्रेशन के शिकार है। सहज समाधि में, सहज आनंद में, सहज प्रसन्नता में रहना चाहिए योगी को। अब लोगों को ये चिंता रहती है योग से हेल्थ तो मिल गई, वेल्थ कैसे बढ़ेगी। मैं कहता हूं कोई योग ठीक से समझ ले ना, जान ले, कर ले, तो एक योगी मिनिमम महीने में 1 लाख, अब बिना वेल्थ के तो दुनिया नहीं चलती, थोड़ा और पुरुषार्थ कहे तो महीने में 5-10 लाख। और अभी हमने बहुत कुछ बिल्ड किया, करवा दिया भगवान ने, हम तो यंत्र हैं प्रभु के। योगी हमेशा इस तत्व में जीता है, ज्ञान संवेदना सब कुछ करने का सामर्थ्य प्रभु दे रहा है, मैं यंत्र हूं। अभी दिल्ली के पास हम दुनिया का सबसे बड़ा एक वेलनेस सेंटर बनाने वाले हैं, और एक सेंटर का कम से कम उसका इवैल्यूएशन करेगा तो 1 लाख करोड़ रुपए उसकी वैल्यू होगी। क्या मतलब हुआ? यू कैन बिल्ड द वेल्थ थ्रू योगा। योग में सब कुछ है, स्वास्थ्य भी है, समृद्धि भी है, शांति भी है, जीवन का निर्माण भी है, निर्वाण भी है, सब कुछ है, और सारी दुनिया को जरूरत है। देखो मोटे मोटे पाकिस्तान में भी बहुत है, और मुल्लों की ज्यादा जरूरत है, माल खा खा करके सब भीतर ही छुपाए बैठे हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, सबको कपालभाति अनुलोम विलोम की जरूरत है। मैं देवबंद में गया था आज से 15 साल पहले, तो मैंने सबसे कहा साहब मोटे मोटे पेट लेके बैठे हुए कपालभाति करो। बोले बाबा जी हम करते ही हैं, नहीं तो जो बकरा मुर्गा खाते नीचे से निकले ही नहीं। हाँ, शाक सब्जियां तो फिर भी हजम हो जाती है ना, ये जो मांसाहारी उनको वो बकरा भी सीधा होके निकलता है कपालभाति करने से। तो ये मांसाहारियों को भी जरूरत है, शाकाहारियों को भी जरूरत है। शाकाहारियों को योग से शक्ति मिलेगी। कुछ लोगों को गलत फहमी है, हम तो मांस नहीं खाते, हमको ताकत कहां से मिलेगी। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी इंसान जो मेरी एज का नहीं, मेरी से आधी एज का, किसी भी कंपटीशन में स्वामी रामदेव के साथ आ जाए, दौड़ने से लेकर के, रेसलिंग से लेकर के, तो योग में ताकत है। तो दुनिया को ताकत चाहिए तो योग, दुनिया को खाना पचाना है तो योग, दुनिया को खाने कमाने लायक होना है तो योग, वेल्थ क्रिएट करना है तो योग, हेल्थ क्रिएट करना है तो योग,
और राजनीति करनी है तो योग। जैसे राजनीति देश के प्रधानमंत्री के योग नीति के साथ जोरदार अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री का। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी, गृह मंत्री योगी, हमारे रक्षा मंत्री योगी, और हमारे अब तो गडकरी साहब ने 45 किलो हद कर दी साहब वजन कम करने की भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है। योगी सरकार है, योग नीति से राष्ट्र नीति चला रहे हैं, राष्ट्र नीति। ये है योग की महिमा। अब लगता है इस समय दुनिया में ना कुछ पागल पागल लोग दुनिया चला रहे हैं कुछ। मुझे लगता है अब अनुलोम विलोम को कि ट्रंप को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस भाई साहब को पता ही नहीं पहले क्या बोला और बाद में क्या बोल दिया। पहले बोला मैंने युद्ध रुकवाया, बाद में बोला नहीं मैंने नहीं रुकवाया थे, तो मोदी जी ने रुकवाया। खैर ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन सच में योग की जरूरत ट्रंप को भी है, पुतिन को भी है, जेलेंस्की भी है और किम जोंग को भी है। सबको जरूरत है। वो बेचारा चलता है तो ऐसा लगता है पूरा भूगोल चल रहा है, गोल मटोल चल रहा है। अरे भाई आदमी ढंग का लगेगा योग करेगा तो। हाँ सच में शी जिनपिंग भी देख लेना, एक दिन योग की शरण में ही आएंगे। और भारत तो गुरु रहा है चाइना का। हाँ वहां तो दलाई लामा जी बोलते हैं भारत हमारा गुरु देश है। तो ये सारी दुनिया योग की शरण में आएगी। हमें थोड़ा सा ऐसा हंसी खुशी में रहना पसंद है, इसलिए माफ करना हमारा टाइम हो गया होगा। नहीं मेरा टाइम बाकी है अभी, मतलब यहाँ के कार्यक्रम का टाइम हो रहा है। हाँ नहीं तो मेरे पास भी पर्ची आ जाएगी। ये पर्चा और खर्चा का मामला बड़ा गड़बड़ है। तो भाई साहब देखो, आप हंसी खुशी से योग कीजिए, आपको जो चाहिए। और देखो योग क्या, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग ये मूल में है। बाकी तो श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय योग है। हमारा शास्त्र का एक एक शब्द, वेद दर्शन उपनिषद पुराणों का एक एक शब्द योग है। जोरदार अभिनंदन। इतना विराट योग हमने पाया अपने पूर्वजों से। एक एक शब्द योग है, शब्द ब्रह्म है वो। ऐसे योगियों की संतानें होकर के हम 365 दिन घरों में बैठे रहे। एक दिन इंटरनेशनल योग डे के दिन जरा ऐसे ही ठुमकते ठुमकते पहुंच गए। ऐसी बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, रामकृष्ण की संतानें हैं, तो हमें 365 दिन योग करना चाहिए। जोरदार ताली ठोको अब और योग करना है इस संकल्प के साथ। और मैं भी करता हूं ना। और लोग कहते हैं जी जिम्मेदारी है। मैंने कहा हमको गैर जिम्मेदार समझ रखा है, हम योग नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री जी योग नहीं करते, देश के गृह मंत्री जी सब करते हैं ना। तो देखो ये सारे हमारे मिनिस्टर साहिबान सब रोज योग करते हैं। जो योग करेगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसी बढ़ जाएगी। तो सब योग करें, कराएं। और भारत के हर गांव गली मोहल्ला से 21 जून को कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग करें। आह्वान, ये गौरव है साहब। ये योग की विद्या यदि ईसाइयों के पास, मुसलमानों के पास, कम्युनिस्टों के पास, कपिलिस्टों के पास और पता नहीं किन्हों दूसरे लोगों के पास होती तो दुनिया में इसको इतना गौरव बखान करते। वी हैव योगा, वी हैव स्पिरिचुअलिटी। और इससे हमारा इस्लाम महान है, हमारी ईसाइयत महान है, हमारे लेनिन मार्क्स माओ महान है। अरे योग महान है, उससे हर व्यक्ति की महानता बढ़ेगी। बहुत बहुत बड़ी विद्या है। तो इसके ऊपर गौरव करना सीखें और इसको इतना आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के ऊपर एक फर्ज है। हमारा एक कर्ज होता है, एक फर्ज होता है। तो कर्ज के लिए तो फर्ज के लिए तो पूरी दुनिया वैसे ही जी रही है। हमारे ऊपर ऋषियों का एक बहुत बड़ा ऋण है कि हम ऋषियों के वंशधर हैं। तो 1 घंटा तो हमें योग के लिए देना चाहिए। और 1 घंटा हमने योग किया और थोड़ा करवा भी दिया ना, सब देश की सूरत बदल जाएगी। पूरी दुनिया में, भारत में भी लाखों करोड़ रुपए दवाई खा रहे, लाखों करोड़ रुपए लड़ाई झगड़े में खर्च कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब में खर्च कर रहे हैं। हम लोग इतने मस्त रहते हैं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, ये हमारे वर्किंग आवर्स हैं, और मस्त रहते। बोले बाबा जी क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ नशा तो नहीं करते? बोलो इतने मस्त रहते हो जैसे कुछ पी रखी हो। मैंने कहा हमने वही पी रखे, भगवान शिव ने पी रखी। शिव कितने मस्त हैं, समाधि में रहते हैं। अच्छा हम इतने बावड़े, भगवान शिव जी को पिला दी भांग और भैरव को पिला दी दारू, दोनों योगी। क्या
क्या कर दिया हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ। तो साहब, आप आदि योगी शिव की तरह योगी बने, अपने पूर्वजों की तरह योगी बने, और सच में इससे आपका स्ट्रक्चर करेक्ट बहुत अच्छा होगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी पत्नी दूसरी की तरफ देखे भी नहीं झांक कर, आप इतने स्मार्ट रहेंगे। हाँ हाँ, नहीं तो बहुतों का जो है वो 30-35 साल में, पहले 60 साल का उजड़ता था, रेगिस्तान उजड़ जाता है। मैं लोगों को देखता हूं ना, योग होते हुए लोग गंजे क्यों हैं? आप करना, किसी के बाल झड़ गए हो तो माफ करना है, ऐसे बोल रहा हूं। योग होते हुए लोग बीमार क्यों हैं, मोटे क्यों हैं? योग होते हुए लोगों को बीपी शुगर क्यों है, लिवर किडनी फेलियर क्यों है? 99% लोगों को हम योग से सब प्रकार से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब यशस्वी हो ये इंटरनेशनल योग डे, और योग धर्म बने, और सारी दुनिया भारत के ऋषियों के बताए मार्ग पर सनातन के पथ पर चले। और ये सनातन का गौरव काल है, और इसमें ये आयुष मंत्रालय का ये जो पुरुषार्थ है, इसके लिए फिर से एक बार राघवेंद्र जी का, राजेश जी का, कुटेचा साहब का, और हमारे प्रताप राव जी का, और भाई कल्चर एंड टूरिज्म साहब, हम पूरी दुनिया में अब ऐसा ही कल्चर लेकर के आएंगे, ऐसा ही टूरिज्म लेके जाएंगे। नहीं तो लोग हट फिर करके वजन बढ़ा लेते हैं, तो योग करेंगे तो थोड़ा पतले पतले होकर के घर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत साहब, पूज्य मुनि जी महाराज, जिन्होंने एआई की बात की, आरआई की बात की। महाराज, अभी ऐसा ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जब धमाका होगा ना, पूरी दुनिया इधर ही लौटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की अभिनंदन स्वामी जी का, अभिनंदन। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर आपका बोलना, आपका हंसना, आपका हंसाना, योग सिखाना अपने ह्यूमर के साथ। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद स्वामी जी का। अब हम आगे बढ़ते हैं बुक रिलीज की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसके लिए टीमों ने बड़ी मेहनत की है। रिलीज ऑफ योगा प्रभाव रिपोर्ट बाय CCRYN। टीम सर्वेक्षण को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगी। टीम सर्वेक्षण को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगी। टीम सर्वेक्षण, टीम सर्वेक्षण की इस मेहनत के लिए उनको फेलिसिटेट करेंगे। जोरदार तालियां, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम। श्री प्रताप राव यादव जी फेलिसिटेट करेंगे टीम को। बड़ी मेहनत का काम है, लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ रिसर्च गोज इनटू इट। इसीलिए गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीम। लेट्स मोटिवेट देम टू डू फर्दर सच रिसर्च एंड प्रेजेंट द बुक, publish the book, bring the knowledge forward. Dhanyavad sir. Release of book, a scientific analysis, scientometric analysis of yoga's global influence by Pehle India and CCRYN. जोरदार तालियां टीम के लिए। टीम को
हम सामने बुलाना चाहेंगे फेलिसिटेशन के लिए। It's a proud moment for the team because the book has been released after a lot of research, lot of analysis, lot of R&D has been done, efforts. We appreciate that. Now we move forward. We're releasing. Okay. So we will present memento to the team. मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से कि यहीं पर ठहरे। उनके इस हार्ड वर्क के लिए, इस मेहनत के लिए उन्हें मोमेंटो दिया जाएगा। वो डिजर्व करते हैं। जो मेहनत, जो रिसर्च एनालिसिस उन्होंने किया है, इस ज्ञान को हम सब के साथ साझा करने के लिए जोरदार अभिनंदन। A big round of applause to the team. हमारे सारे डिग्निटरीज का आशीर्वाद भी मिल रहा है बच्चों को, जिन्होंने इसमें मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे towards the next release of book भारतीय वृक्ष वैभवम, संस्कृति फाउंडेशन एंड CCRYN। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसमें जितने भी लोगों का योगदान है उनके लिए हम एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपने एफर्ट्स लगाए, समझा जाना और फिर उसे एकत्रित किया इस बुक के तौर पर। मोमेंटो पेश करेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करती हूं यहां पर कि हमारी टीम को मोमेंटो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं श्री वरुण जोशी जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर टू रिलीज an e-book on International Day of Yoga, the yogic path of a statesman vision over a decade. बहुत ही सुंदर वरुण जोशी जी को का अभिनंदन करते हैं हम इस कंपाइलेशन के लिए। हम फेलिसिटेट करेंगे वरुण जी को। आप सभी की जो ये तालियों की गड़गड़ाहट है ये कम ना हो, इसी से उत्साह वर्धन होता है। Now we will release Yoga Samvesh video, a Yoga Samavesh video. योग समावेश
स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर एक कदम। पेश है एक नया योग मॉड्यूल जो हर व्यक्ति, हर उम्र और हर क्षमता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। अब योग होगा सबके लिए आसान। घर बैठे करें अभ्यास, सही तरीके से, सही मार्गदर्शन के साथ। योग से जुड़िए और अपनी जीवन शैली को संतुलन और स्वास्थ्य के साथ बदलिए। बहुत सुंदर, अभिनंदन, जोरदार तालियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री प्रताप राव जाधव जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी, आयुष एंड एमओएस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि वो एड्रेस करें हमारी गैदरिंग को। नमस्कार। सबसे पहले मैं गुजरात के अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में जान गंवाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख से और अपूर्णीय क्षति से सहन करने की शक्ति दे। यह एक हृदय विदारक आपदा है और पूरा देश इस दुख की घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़ा है। आज यहाँ योग कनेक्ट के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, विश्वविख्यात योग गुरु आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक गुरु आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, भारतीय योग एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती हंसा जी योगेंद्र, कैवल्य धाम के सीईओ एवं भारतीय योग एसोसिएशन के सचिव श्री सुबोध तिवारी जी, आयुष विभाग के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्रीमती मोनालिसा दास जी, CCRYN के निर्देशक डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए योग गुरुगण, विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक, मीडिया के बंधु, प्रिय मित्रों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। योग भारत के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से वैश्विक कल्याण के लिए हमारा दृष्टिकोण है। हम 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समीप पहुंच रहे हैं और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारे समय के साथ गहराई से जुड़ती है क्योंकि आज मानवता अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है जो सीमाओं से परे है। जलवायु परिवर्तन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य संकटों तक, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लेकर वैश्विक महामारी तक, योग मानवता के लिए भारत का उपहार और अमृत विरासत है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है। साथियों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, तो यह भारत और दुनिया के लिए होलिस्टिक हेल्थ की ओर एक ऐतिहासिक क्षण था। मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि
योग सभी सीमाओं, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति और धर्म से परे है और सिर्फ भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है, जो वास्तव में इस वर्ष के विषय को दर्शाता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के कॉरपोरेट जगत से लेकर गांवों के किसानों तक, गर्भवती माताओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक योग स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए एक एकीकृत शक्ति बन गया है। साथियों, मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CCRYN ने योग प्रभाव के तहत एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है और जिसमें पता चला है कि हमारे देश में 11% से अधिक उत्तरदाता नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। सामान्य प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता 39% से अधिक लोगों में है। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 33% लोगों ने सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर जागरूकता और भागीदारी दिखी। 45% से अधिक लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है। युवाओं की तुलना में बुजुर्गों में योगाभ्यास के प्रति अधिक रुझान है। हमने यह भी देखा कि पिछले 10 वर्ष में योग पर शोध प्रकाशनों में काफी वृद्धि हुई है। इन सब परिणामों से हमें पता चलता है कि हम सब मिलकर योग को होलिस्टिक हेल्थ एवं वेलनेस का एक प्रयास बनाने की सही दिशा में जा रहे हैं। साथियों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की वैज्ञानिक प्रमाण शक्ति में लगातार वृद्धि हुई है। योग का विज्ञान सचमुच सम्मोहक है, क्योंकि हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। साथियों, वैश्विक योग क्रांति महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर पैदा कर रही है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में योग अभ्यासी योग से संबंधित गतिविधियों पर औसतन $90 प्रति माह खर्च करते हैं। इससे हम भारत की इस सॉफ्ट पावर की महत्ता की कल्पना कर सकते हैं, जो अब 180 से अधिक देशों में प्रचलित है। योग और ध्यान पर्यटन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, योग क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन के माध्यम से भारत ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी का नेतृत्व करने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के बाद आयुर्वेद सहित आयुष परंपरागत प्रणालियां दूसरा ऐसा क्षेत्र बन सकती है जिसके जरिए हमारा भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक गति दे सकता है। साथियों, जैसा कि हम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मना रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं और समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए अभ्यास करें। चाहे आप 8 वर्ष के हो या 80 वर्ष के बुजुर्ग हो, चाहे आप महानगर में रहते हो या दूर दराज के गांव में, योग सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ है।
इस योग यात्रा के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर हम 10 प्रमुख कार्यक्रम के सिग्नेचर इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर सभी केंद्रित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 21 जून को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जहां भी हो बड़ी संख्या में इसमें भाग लें। हम योग संगम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 10 प्रमुख शहरों में योग महाकुंभ और देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का कार्य प्रदर्शन और अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सरकार, उद्योग, कारपोरेट, सामाजिक संगठन और आम आदमी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक साथ आएंगे। आइए हम योग को अपने दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और भारत के इस उपहार को अपने परिवारों, समुदायों और पूरे विश्व के साथ साझा करेंगे। जय हिंद, जय योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को अपने बहुमूल्य वचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मैंने स्वामी जी से सीख लिया कि जो योग में समाधिस्थ हो गए उन सब की तंद्रा को भंग करना है तो पहले एक बार थोड़ा ठीक से जय बुलवाना पड़ेगा। योगा कनेक्ट वैश्विक योग शिखर सम्मेलन में उद्घाटन के सत्र में मैं अपनी बात कहूं उससे पहले 2 दिन पूर्व हुई विमान विभीषिका में असमय काल कबलित हुए उन सारे लोगों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति, परिवारजनों के प्रति इस सभागार में उपस्थित हम सब लोगों की तरफ से हृदयपूर्वक बहुत सारी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उद्घाटन के इस अवसर पर आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के साथी, वरिष्ठ नेता और आयुष मंत्रालय के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री प्रताप राव जाधव जी, योग गुरु और योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करने वाले। अभी महाराज जी ने कहा कि योगा से वेल्थ भी होती है, बाय प्रोडक्ट होता है। अब महाराज जी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको देख करके लोगों को समझ में आ जाता है कि महाराज जी का हवाई जहाज आज कौन से हवाई अड्डे से उठ के कौन से हवाई अड्डे पे उतरना है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी प्रकृति और पर्यावरण की चेतना और उस चेतना का विस्तार करते हुए भारतीय संस्कृति की चिति को राष्ट्रीय चिति बनाने के संकल्प के साथ में जुटे श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती हंसा योगेंद्र जी, आदरणीय सुबोध तिवारी जी, कार्यक्रम के मेरुदंड आदरणीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, आदरणीय मोनालिसा जी, आदरणीय राघवेंद्र जी, और इस महत्वपूर्ण कार्यशाला जो 2 दिन तक आयोजित होने वाली है उसके उद्घाटन के सत्र में उपस्थित सभी योग गुरु, ऐसे सारे लोग जिन्होंने योग को अपने जीवन में उतारा है, ऐसे सारे विद्वान
यूथ आइकन्स, कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया भर से आए हुए मित्रगण, मीडिया के साथियों, मैं हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो आगामी 21 जून को होने वाला है, उसकी एक प्रमुख पहल, जैसा अभी प्रताप जी ने अपने भाषण में कहा कि 10 अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, उसकी एक प्रमुख पहल योगा कनेक्ट के बैनर के तले आज ये योग के विज्ञान, योग के सार, उसके आध्यात्मिक विरासत और व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, विश्व के समग्र परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता, वर्तमान संदर्भ में जिस तरह के ग्लोबल टर्बुलेंस से, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस से पूरा विश्व गुजर रहा है, ऐसे समय में जब योग और भी अधिक प्रासंगिक हो गया, समय की आवश्यकता पूरा विश्व बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, उस समय आयोजित इस वैश्विक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। एक ऐसा अनुष्ठान जो 2015 में प्रारंभ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस शाश्वत ज्ञान ने मानवता के कल्याण के संकल्प और भारत के दर्शन का विस्तार किया, भारत की एक नैसर्गिक प्रतिबद्धता विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की है, उसको विस्तार दिया। ऐसे महत्वपूर्ण, उस विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए मैं आयुष मंत्रालय के मंत्री, मेरे साथी आदरणीय प्रतापराव जी का और आदरणीय वैद्य राजेश कोटेचा जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा व्यक्त किया गया संकल्प, जो दुनिया भर के लोगों के बीच में एक संतुलन और शांति स्थापित करने का प्रयास था। पिछले 10 वर्ष में विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न संस्कृतियों, उन सब के बीच में समरसता को स्थापित करने में निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने लोगों के जीवन का, दैनंदिन जीवन का हिस्सा योग को बना करके भारत की तरफ से एक अमूल्य उपहार पूरे विश्व को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यूनाइटेड नेशंस, जिसके संबोधन की चर्चा अभी सभी ने की, अपने संबोधन में उस समय ये कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाषण या भाषण के ये वाक्य एक युगांतरकारी वैश्विक आह्वान के रूप में थे, जिसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने के लिए एक इतिहास बनाते हुए, एक इतिहास रचते हुए, एक कीर्तिमान बनाते हुए एक ही आह्वान पर 177 देशों को एक साथ आने का अवसर प्रदान किया। और उस दिन से लेकर के ये दिन सभी भाषाओं के बंधनों से ऊपर, सारे राष्ट्रीयता, धर्म और राजनीतिक सीमाओं से परे एक वैश्विक आंदोलन के रूप में आकार ले चुका है। मित्रों, योग अब केवल एक शारीरिक समन्वय या मन और शरीर के बीच में संतुलन का प्रयास मात्र नहीं रहा है, उसका साधन मात्र नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक चुनौतियों के बीच में जीवन की एक महती आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। ये एक ऐसा माध्यम है जो तनाव से भरे हुए जीवन में एक आत्मनियंत्रण और आत्मिक शांति प्रदान करते हुए एक समन्वय स्थापित करने का साधन बन चुका है। आज जहां हम केवल एक पर्व मनाने के लिए 21 जून को विश्व भर में लोग एकत्रित होने वाले,
करोड़ों की संख्या में, अभी स्वामी जी ने कहा कि कई 100 करोड़ लोग एक साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित आएंगे। ये केवल एकत्रीकरण नहीं है, अपितु उस अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने का एक कदम है जो सहस्त्राब्दियों से, हजारों वर्षों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा रही है। योग चाहे आज पूरे विश्व भर ने स्वीकार कर लिया और अब उसका वैश्विक स्वरूप बन गया है, लेकिन इसकी आत्मा पहले भी भारत में थी और आज भी भारत में बसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया ये योगा कनेक्ट के कार्यक्रम और इस श्रृंखला में होने वाले सारे कार्यक्रम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति चेतना के विस्तार और उसके प्रति जागरूकता और योग को दैनंदिन जीवन में सम्मिलित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होने वाले हैं। आज के इस मंच पर और मंच के सामने अगले 2 दिन में सारे डिस्कोर्स में जहां अनेक नीति निर्माता एकत्रित होंगे, ऐसे सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में योग को उतार करके योग के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे सारे लोग मार्गदर्शन करेंगे। योग के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेकर के और उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तक के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं होंगी और योग के विस्तार के चलते हुए मानव कल्याण, उसके चलते हुए जो इम्पैक्ट रजिस्टर हुए हैं, जिसके बारे में 2 शोध ग्रंथ अभी विमोचन किए गए हैं, उनके बारे में भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। और ये सारी चर्चाएं योग के प्रति हमारे जुड़ाव को न केवल समृद्ध करेंगे, योग के प्रति हमारे जुड़ाव को न केवल समृद्ध करेंगे, अपितु प्रारंभ होने के इस 10 साल की यात्रा में योग ने किस तरह से समाज जीवन को, व्यक्ति के जीवन को, परिवार के जीवन को इस वैश्विक स्तर पर किस तरह से प्रभावित किया है। और निश्चित रूप से ये आंकड़े देख करके आत्मसंतोष तो होता ही है, साथ ही साथ भारत का पूरे विश्व के कल्याण के लिए विश्व बंधु के रूप में जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम सबको के ऊपर गर्व करने का अवसर भी हम सबको प्रदान करता है। मित्रों, ये अध्ययन केंद्रीय संस्कृति मंत्री के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि योग भारत की जो सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर को पूरे विश्व भर में ले जाने में एक बहुत बड़े योजक के रूप में चिन्हित हुआ है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, अपने सांस्कृतिक महत्ता के आधार पर, हमारे ऋषियों मनीषियों के अनुभूत ज्ञान की ताकत के आधार पर, हमारे मंत्र दृष्टाओं के द्वारा रचे गए मंत्रों की शक्ति के आधार पर, भारत के सांस्कृतिक वैभव के आधार पर पूरे विश्व का अनेक वर्षों तक मार्गदर्शन किया। प्रणेता के रूप में, एक विश्व कल्याण के उद्योजक के रूप में एक बड़ी भूमिका का सदियों तक निर्वहन किया। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में जिस तरह की परिस्थितियां बनी और गुलामी के उस लंबे कालखंड में, पहले मुगलों की गुलामी और उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी, इस गुलामी के लंबे कालखंड में जिस तरह से हम अपनी जड़ों से डिस्कनेक्ट हो गए और उस डिस्कनेक्ट होने के कारण से जब हमने अपनी इस तरह की सांस्कृतिक विरासत पर, अपने ज्ञान की इस अमूल्य थाती पर गर्व करना समाप्त कर दिया, छोड़ दिया, उसके कारण से भारत की जो दुर्दशा हुई, भारत की जो स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में कम हुई, वो और भारत इस परिस्थिति में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन सौभाग्य से पिछले 10 साल में जिस तरह से 10-11 साल में भारत ने जिस तरह का परिवर्तन देखा है और उस परिवर्तन के चलते हुए जहां एक तरफ पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्वीकार्यता बनी और बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी भारत के में उद्भूत या भारत में अनुभूत उन सारे ज्ञान के तंतुओं को एक बार फिर स्वीकार करने और उन पर गर्व करने की परंपरा का नया समावेश नए सिरे से होने लगा है। और भारत में क्योंकि उनकी स्वीकार्यता बनी, हमने अपनी थाती को सम्मान देना प्रारंभ किया, तब पूरे विश्व में आज उसकी स्वीकार्यता और सम्मान नए सिरे से स्थापित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में जिस तरह से विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत का सम्मान बढ़ रहा है। विश्व के लगभग 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से लगभग 80 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में आज वेद की विभिन्न विद्याओं पर, वेद के विज्ञान पर शोध करना प्रारंभ हो गया। आयुर्वेद की स्वीकार्यता, आदरणीय राजेश जी यहाँ बैठे, आयुर्वेद की स्वीकार्यता नए सिरे से जिस तरह से पूरे विश्व भर में बढ़ रही,
आज आयुर्वेद के विभिन्न रसायनों की, विभिन्न जो है दवाइयों की स्वीकार्यता जिस तरह से बन रही, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आयुष मंत्रालय की टीम का कि उन्होंने जिस तरह से क्लिनिकली साइंटिफिकली वैलिडेट करने पर दिशा में काम किया। आदरणीय स्वामी जी के पतंजलि संस्थान ने भी, मैं बालकृष्ण जी के साथ जाकर के पूरी गहराई के साथ उसका अध्ययन करके आया, क्योंकि मेरे वो रुचि का विषय था कि किस तरह से देश में सरकार और सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश की इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में भारत सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, भारत हमारी इस पुरानी परंपराओं के आधार पर, भारत हमारे इस पुराने ज्ञान और सांस्कृतिक वैभव के आधार पर, इस कल्चरल प्रोवेस के आधार पर एक नई इकोनॉमी, जिसको आज पूरे विश्व के वर्टिकल पे एक नए ऑरेंज इकोनॉमिक वर्टिकल के रूप में पहचान मिली है, उसमें विश्व का नेतृत्वकर्ता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। न केवल संस्कृत और आयुर्वेद, अभी तो हमारी जीवन पद्धति की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही, हमारी शिक्षा पद्धति की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व भर में नए सिरे से पहचान की जा रही। मुझे अभी एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, और स्वामी जी उसने पूछा कि आज ऐसा एकाएक क्या हो गया है कि पूरे विश्व में भारत के इन सारे ज्ञान विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ने लगी, भारत के द्वारा, भारत से निकले, भारत में उद्भूत विषयों को एकाएक विश्व में पूछ परख होने लगी। मैंने उनसे कहा कि पहले हम भारतीय ही अपने विषयों पर गर्व नहीं करते थे, और क्योंकि भारत की छवि पूरे विश्व भर में इस तरह की थी कि विश्व ने भारत को एक भिखारियों का देश, गरीबों का देश, भ्रष्टाचार में जकड़ा हुआ देश, ऐसी छवि विश्व भर ने बना दी थी। लेकिन ये जो नया भारत की छवि पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इस 11 साल में भारत में जिस तरह का एक सांस्कृतिक पुनरुद्भव और पुनर्जागरण का दौर जिस तरह से सृजित हुआ है, इस 11 वर्षों में जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है, उसके चलते हुए आज जब भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा, और जिस देश का, जिस समाज का, जिस संस्थान का सम्मान बढ़ता है, उसकी स्वीकार्यता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत के जो है, भारत से निकले हुए ज्ञान और विज्ञान की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से हम गुजर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम सबको जीने का, हम सबको काम करने का, हम सबको भारत के इस बदलते हुए परिदृश्य का न केवल दृष्टा बनने का, अपितु इसका साधक बनने का, इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का पार्ट बनने का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के व्हील को जो है जिसने घूमना शुरू कर दिया, उसको गति प्रदान करने का अवसर हम सबको मिला है। निश्चित रूप से योग उसका एक माध्यम है, लेकिन अनेक माध्यमों से में से एक महत्वपूर्ण इस योग के साथ में हम सब जुड़े हैं, हम सब जुटे हैं। मैं आप सबका उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि योग जीवन में समन्वय स्थापित कर, योग जीवन में जो है जीवन के बिखराव को, स्वामी चिदानंद जी कह रहे थे कि योग जीवन के टुकड़ों में बटे हुए जीवन को साथ जोड़ने का प्रयास करता है। मैं तो ये मानता हूं कि योग एक कंप्लीट साइकिल है विच स्टार्ट्स यूनाइटिंग अस, बट अल्टीमेटली वो हमको जो है विमुक्ति की ओर लेकर के जाता है। इट डिटैचेस फ्रॉम दैट वर्ल्ड। हमको प्रारंभ से जब योग जब शुरू होता है, तब अष्टांग योग की जो परिकल्पना है उसमें प्रारंभ में हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन सिंथेसिस के बाद में अल्टीमेटली वी लीड टुवर्ड्स डिटैचमेंट, और ये अल्टीमेट डिटैचमेंट के मार्ग पर हम सब लोग चढ़ बने। योग हमारे जीवन का हिस्सा बने, योग हमारे जीवन का आधार बने, योग हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग बने। ये संकल्प लेने का दिन निश्चित रूप से आज है, और इस अगले 2 दिन की इस कार्यशाला में जो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिन विभिन्न विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आख्यान होंगे, उन सब के चलते हुए निश्चित रूप से लोगों को योग के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा मिलेगी। मैं एक बार फिर आयुष मंत्रालय की पूरी टीम का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सब से जुड़ने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सबकी बातों को सुनने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सबका मंच पर बैठे हुए लोगों का सानिध्य प्रदान किया। इस सब के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए हम सब के जीवन में योग उतरे, योग हम सब के जीवन का अभिन्न अंग बने, इस अपेक्षा और शुभकामना के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने योगा कनेक्ट को एक्नॉलेज किया एज अ ग्लोबल योगा समिट
उसके लिए धन्यवाद। अब हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे श्री चिदानंद सरस्वती जी, फेलिसिटेट करेंगे मंत्री जी को, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और हमारे साथ वक्त बिताया, अपना जो नॉलेज है वो हमसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसका। श्री प्रताप राव जाधव जी का भी, मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हम हृदय से फेलिसिटेट करना चाहेंगे, आपने हमारे साथ वक्त शेयर किया, नॉलेज शेयर किया, सपोर्ट किया, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है टू टेक द मिशन अहेड। अब मैं डॉक्टर राघवेंद्र राव जी जो डायरेक्टर हैं CCRYN के, उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सो आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर राघवेंद्र राव जी। आप सबको नमस्कार। Sir, on behalf of CCRN and Ministry of Ayush and Moraji Desai National Institute of Yoga and the entire institutes of Ayush Ministry, I deeply thank Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Culture and Tourism, Government of India, and Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of Ayush, Independent Charge, and Ministry of State for Health and Family Welfare. Sir, under your dynamic leadership, and you have brought a spark to the Ayush Ministry in the field of yoga. And this year, we are celebrating the 10th anniversary of yoga in a very large grandeur with 10 flagship programs. It was because of your untiring efforts and your support, sir, this has been possible. Thank you very much, sir. I also thank Revered Swamiji Ramdevji Maharaj, Founder Chairman Patanjali Yogpeeth Trust Haridwar, who made this session very lively with his words, inspiring words, and he put yoga so in such simple language that even a layman can understand. It is, sir, because of your untiring efforts, yoga is now in every household in our country, sir. I thank you for this. Thank you, sir. I also have heartfelt gratitude to our respected Swami Chidanand Saraswati ji, the spiritual head of Paramath Niketan, who has talked very beautifully about inner connectedness. We have been in the outside world. Our thoughts and senses are always towards the outside world, and he is able to make us feel how to be connected inwards, and he has really given a heartfelt heart. He has touched all our hearts with his wisdom and with his eloquent speech, sir. And special thanks to Hansaji Yogendra ji, President, Indian Yoga Association, Head of Yoga Institute, Mumbai. She has talked very much about how to join intellect and emotions. Emotional intelligence is the need of the hour. Compassion is the need of the hour. Thank you so much, ma'am, for your wisdom. I also thank Shri Subodh Tiwari ji, Chief Executive Officer of Kaivala Dham, General Secretary, Indian Yoga Association, for your contribution to the field of yoga research, being one of the oldest yoga research institutes in the country, starting the yoga research since the year of 1924 onwards with a journal called Yoga Mimamsa, and you have been leading the torchbearer of this institution, sir. I thank you for your presence here. I also thank our dynamic Secretary, sir, Vaidya Rajesh Kotacha ji. Sir, under your leadership, this ambitious program was made possible by your skillful administrative leadership, policy guidance, and continuous encouragement, sir. I also have my gratitude to Srimati Monalisa Das ji, who is the Joint Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, who inaugurated this program with a beautiful welcome speech and invited all the gathering. Last but not the least, I would like to thank all the people who participated in this particular gathering, who come here in very large numbers. I know that many people are still waiting at the gates to enter inside here, and since the hall is full, we are not able to accommodate everybody here, and it's been an overwhelming response to all of us for this particular event. I thank the team Sarvekshan, Pehle India. I thank Varun Joshi ji. I also thank Sanskriti Foundation for the notable contributions for the release of these books in this gathering. I thank the media and the publicity team who have come in large numbers to cover this event. I thank the security team, the technical team, the management team, all the staff of CCRN, all my colleagues who have worked day and night in the last 1 week to make this program a grand success. And I thank all the yoga institutes here who have come in large numbers. I just want to take a few names. We have the Heartfulness Institute, Patanjali Yogpeeth, Paramath Niketan Ashram, the Yoga Institute, Kaivala Dham, Indian Yoga Association, Pehle India,
and Indian Nationality Organization, Indian Nationality Yoga Graduates Medical Association, and all such institutes. Sorry if I have left out some names. There are many such institutes from Delhi and above, outside Delhi who have come here in large numbers, especially even from Rajasthan. Almost 15 colleges students have come from 15 colleges from Rajasthan, and people have come from Meerut, people have come from Haryana as well. I thank all of them for being here. Thank you so much. Jai Hind. Now we all stand up. We'll end the session with the national anthem. Request all of you to please stand up. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जन गण मन वंदे। थैंक यू। अभी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी डिग्नेटरीज का, हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट का, जिन्होंने हमारे साथ नॉलेज की कई सारी बातें शेयर की, हमें सिखाया, समझाया, हंसाया। धन्यवाद उसका। आप सभी का भी धन्यवाद यहाँ पर पेशेंटली बैठने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान रिसीव करने के लिए। अब हम एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस यहीं पर एकत्रित होंगे। हॉल बी में साइंटिफिक सेशन है, आप वहां पे भी जा सकते हैं। The kids will be provided here on your seat, so please do not rush to the registration counter. You will get your kit here itself on your seat. Thank you so much. We'll gather in some time.
योगा एंथम का एक वीडियो इस समय को यूटिलाइज करने के लिए हम चला रहे हैं। अपना अटेंशन दीजिएगा। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। The world's leading health science And the AI provides that connection. All this. धीरे धीरे अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ वो इकट्ठे हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे धन्यवाद आप आए आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं।
अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें जितने लोगों की जान गई, उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए हम 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे रखें। कुछ देर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी
Hi, everybody. We are going to conduct a scientific session here, which is the next program of the day. So the first theme is based on yoga for prevention of NCDs. Emphasis on anti-obesity and inflammation. इस टॉपिक पर अगला डिस्कशन होगा. जितनी भी रिसर्च एंड एनालिसिस है इस टॉपिक पर शेयर की जाएगी बाय द एक्सपर्ट्स. स्वागत करते हैं डॉक्टर मनचंदा का. डॉक्टर एस.सी. मनचंदा, कार्डियोलॉजिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली. एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जो मृत्यु में बदल डॉक्टर एस.सी. मनचंदा. Dr. S.C. Manchanda is a renowned Indian cardiologist with over 6 decades of experience. He completed his MBBS, MD in medicine, and DM in cardiology, all from the prestigious All India Institute of Medical Sciences. He served 36 years at AIIMS, rising to head of the Department of Cardiology, and was instrumental in introducing angioplasty there. After superannuation in 2003, he joined Sir Gangaram Hospital in New Delhi as a senior consultant. Dr. Manchanda is editor-in-chief of the Journal of Prevention Cardiology, contributing over 300 scientific papers and holistic means such as yoga, meditation, diet, and lifestyle. Beyond clinical work, Dr. Manchanda chairs the advisory board of the Diya Foundation, which supports underprivileged children and the elderly. In recognition of his significant contributions to medicine, he was awarded the Padma Shri by the Government of India 2004.
in 2004. जोरदार ताली सर के लिए। अब मैं हैंडओवर करती हूँ माइक सर को ताकि सर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। Good afternoon, friends. Welcome to this very important session. I'm sorry that we are late, but I think this is one of the most important practical utilities of yoga. That is yoga for prevention of non-communicable diseases. As you all know, that we have conquered communicable disease to a great extent. Earlier, people used to die of plague and other communicable diseases, but now majority of the population is dying because of non-communicable diseases. These are diseases which are not caused by any infective agent, but our unhealthy lifestyle, as we call lifestyle diseases. And they are responsible for majority diseases. Leading them is the heart disease, high blood pressure, diabetes is there are lung diseases, there are stress and management, depression. All these diseases are increasing rapidly, especially in the developing countries. And in spite of the fact, although we have progressed quite a lot in heart disease, we can even do a transplant, we can do a bypass, but their incidence is increasing. And therefore, there is need for something more than the conventional means that we are following. And therefore, yoga has been found to be one of the extremely good techniques to control these non-communicable diseases. And that's a very cost-effective technique. And I think we will, in this session, we'll be listening to a large number of speakers who are very, very eminent, not only from India, but also from United States of America. Because we are behind time, I will request the speakers to limit their talk to about 7 to 8 minutes only, because we have 7 speakers in 1 hour and all. And to start with, I will invite Dr. Prabhakaran Durairaj to give us the first talk. Dr. Prabhakaran Durairaj is a very leading cardiologist. He's one of the best researchers in the field of cardiology. He did his DM from All India Institute of Medical Sciences when I was also there. And he is the president of the Center for Chronic Diseases, one of the most brilliant investigators that we have in the country. His research on cardiac rehabilitation after myocardial infarction was for the first time done in 26 centers in India and with uniform methodology. And this paper was published in one of the best journals of cardiology, that is Journal of American College of Cardiology. It was also presented as a late-breaking trial in American Heart Association and received a large number of laurels. And therefore, without taking much time, I will hand over to Dr. Durairaj to give his presentation. Which is the one? This one? Not moving. Can we have the slides, please? So good afternoon, everyone, and sir, thank you for that very kind introduction. It's always a pleasure and an honor to be introduced by your own teacher. So Professor Manchanda was my teacher in cardiology, and then I worked as a faculty under him for several years when he retired in 2000. So that talk, I hope the slides are coming on. The program is titled as Yoga for Prevention of NCDs, emphasis on anti-obesity and inflammation. I'm not really going to talk about obesity and inflammation. And if you look at the causes of NCDs, there are 5 major causes: diet, physical activity, and decreased physical activity, smoking, air pollution, and alcohol. Now, amongst the diet, as Dr. Manchanda says, there are 3 white poisons: sugar, salt, and fat. And we avoid this, we can avoid most of the heart diseases.
So with this background, what I am going to give is a perspective of yoga and cardiovascular disease. And cardiovascular diseases are essentially heart diseases. So when you look at heart diseases are the leading cause of death in India. Nearly a third of mortality or nearly a third of deaths in India is because of heart diseases. And a majority of these deaths occur before the age of 70 years, and we call this premature mortality. And this is very important to understand, because when people die young, it's not only a loss to the family, it's a loss to the economy, and it actually leads to catastrophic expenditure for the family, putting the families into poverty, among other things. So when we talk about cardiovascular disease, we are talking about heart attacks, we are talking about gangrene, we are talking about obesity, we are talking about high blood pressure, we are talking about diabetes, and we are talking about heart failure. So all of these will comprise heart diseases. Now when we think of yoga, what is yoga to me? And if you look at the Ashtanga yoga literature, there are 8 components to yoga, all of which when you compress actually comes into a lifestyle package. And the lifestyle package consists of the right diet, avoidance of tobacco, avoidance of alcohol, stress relief, meditation, mindfulness, and various physical postures and physical activity along with pranayama. So you can see that it's a holistic lifestyle package, and we are not looking at individual components of the yoga here. So how does yoga benefit the heart? Because of paucity of time, Dr. Manchanda has said that I have to finish in 7-8 minutes. I'm not going to get into all the details, but suffice to say that yoga is hugely beneficial for cardiovascular disease. There are multiple mechanistic pathways through which yoga acts. It acts on the heart directly. It acts on several of the risk factors which increase heart diseases. And it also is helpful to patients by reducing stress, by relaxing them, by multiple other pathways, including reducing inflammation. Therefore, it's a no-brainer. So what was the current evidence? I mean, this is 2 years back. There may be a few more studies, but you would be very surprised that there are only 5,000 patients in these which studied yoga overall from amongst 28 published trials. The sample sizes were very small. The duration of follow-up was very small, 24 days to a few years. There's only one study which went for a longer time. And the delivery training was highly variable, and the components consisted of individual components of yoga, mostly asanas or pranayama or meditation. So there were several limitations, and because of this, we embarked on a very large study which Professor Manchanda mentioned, called the yoga care in acute myocardial infarction. And there were several other studies that we participated. So one of the things is post a heart attack or stroke, many people have another heart attack or a stroke or even die within the first year. 20% of people who have a heart attack, stroke, can die within the first year. The medicines which we give, simple medicine, there are 4 simple drugs, can prevent many of those, but cardiac rehabilitation is an important mechanism by which we can prevent a recurrent heart attack or a recurrent stroke or death. Now, what is cardiac rehabilitation? Cardiac rehabilitation comprises a set of activities that include lifestyle modification, having the proper diet, avoidance of tobacco, avoidance of alcohol, increasing physical activity, and managing stress. So this essentially is what is cardiac rehabilitation. But unfortunately in India, cardiac rehabilitation is not taken off very well. There are very few hospitals in the country which have cardiac rehabilitation. And the reason for that is that it's very expensive. You require a physician, you require a nurse, you require a nutritionist, you require a physiotherapist, you require multiple equipments, you require a big area. So we decided that yoga care with a single yoga instructor can provide all the things which a cardiac rehabilitation team can provide. And therefore we devised this study called Yoga Care Trial. And our aim was to improve the effectiveness of yoga-based cardiac rehabilitation and compare it against enhanced standard care
in post-heart attack patients on cardiac mortality, on preventing cardiac death and improving quality of life. And we had two outcomes. One was to reduce the number of deaths, and the second was to improve quality of life. But in addition, we had a range of secondary outcomes. That is, people had to come back to their work much earlier than expected, and a few other things. So in summary, we conducted this trial, as Dr. Manchanda pointed out, in 24 centers across the country. We recruited close to 4,000 patients. We successfully completed a large randomized control trial involving almost 3,960 patients of heart attacks. This was a successful collaboration. We could demonstrate that we could do such a large trial in India. Then it was published in a high-impact journal. There were several other high-impact publications. In fact, there were 4 publications and 10 abstracts. And it was presented at the prestigious late-breaking session in the American Heart Association. And it was an award-winning abstract in American Heart Association. And what we showed was that there was a 9% reduction in deaths. But this was not statistically significant, but more importantly, it really showed the quality of life amongst those who use yoga care was much better than as compared to the usual care. So there's a lot of disturbance. May I request people to settle down a bit? Yeah. Can we request people to settle down a bit? There's a lot of disturbance. Please sit down. This is very I important. request everybody to please sit down and not chit-chat in between while the sessions are going on. It is for a wider awareness that we are conducting these programs, and if people are talking in between, then conveying the message which the speaker wants to convey and spread the awareness, share the knowledge will be incomplete. Thank you so much for your cooperation. Okay, thank you. So what we showed was at the end of the trial, a 9% reduction in heart attacks and stroke, but this was statistically not significant. But there was a significant improvement in quality of life, and we showed a feasibility of doing high quality cardiovascular disease research in this country. And it was very, very low cost as compared to the trials which are conducted currently. So moving on, what we did was in the post-heart attack trial, because that was the first trial of yoga, and doctors did not want to participate in the study. In fact, we had to do the pilot study in UK to show yoga was safe. After that, they started participating in the study. But they were recruiting very low-risk patients, but then we had to show after 1.5 years that it is indeed safe, and they started recruiting patients. But where we can see real benefit is in heart failure patient. Heart failure is a condition which is worse than cancer. 50% of the people die by 3 years. The quality of life is extremely poor. It also causes immense amount of stress to... Can I request people to stop talking, please? देखिए, अगर आप लोग बीच में इस तरह से बातें करेंगे तो स्पीकर किस तरह से आपसे कनेक्ट करेंगे? How do you expect the speaker to connect with you, share the knowledge, impart what they have understood and make you understand if you're chit-chatting in between? Can we bring some maturity here? Right, thank you very much. Can I make an appeal? Please don't talk, it disturbs, because it disturbs the flow of thought. Right, so we embarked on the heart failure trial. As I was saying, heart failure is a condition which is worse than cancer. It causes almost 50% of people who develop heart failure die by 3 years. Now cancer treatment is improved so much that we expect almost 80% survival at 5 years. One of the things is drugs help, but cardiac rehabilitation will help, and that's where yoga is likely to be of great help in terms of reducing mortality as well as improving quality of life. So with the ICMR, Indian Council of Medical Research funding, we have embarked on a very large trial of recruiting 3,500 patients in a randomized fashion, either to receive yoga care or usual care in patients with heart failure. It is being done currently in 15 hospitals all across India.
In addition, even if you're going to show benefits, we want to understand the mechanisms by which we can show the benefit. There are three major ways by which it can benefit. One, yoga actually alters certain biological parameters. We talk about mind-body relationship. It's a relationship between the hypothalamus, pituitary, and the body. So we are looking at hormones which are secreted by the pituitary gland and how yoga modulates that. We are looking at inflammation, and we are looking at what we call as renin-angiotensin system. These are hormones which increase the blood pressure. So in a randomized control fashion, we are looking at people, does yoga reduce all these bad hormones, which increase glucose, which increase blood pressure, which increase, these are called stress hormones. So does it decrease these hormones? That's one question we are asking. Second, we are looking at echocardiography, because echocardiography in patients with heart failure, the ejection fraction, which the amount of blood pumped by the heart is much lower. And we want to see whether yoga can improve that, apart from several other parameters of echocardiography that we will be seeing. We are also embarked on using Apple Watch, which are wearable devices, which can give you data on sleep quality, heart rate variability, atrial fibrillation or irregularity of the heartbeat. So all of these will be measured, and we'll get the results in the next year. We have recruited so far 2,823 patients, and we have around 450 clinical events, but we need around 740 events to evaluate fully the trial very well. We are also making it digitally enabled so that patients can train at home. We have provided 19,000 supervised hours of yoga sessions, and patients are practicing around 35 to 40 minutes of yoga on an average after the initial training phase, and we will finish the study next year, and we have multiple partners including CCRYN, S. Vyasa, AIMS Delhi, and others. In addition, we are also doing a trial of yoga in a very, very difficult condition called pulmonary hypertension, where the mortality is almost 80–90%. And this trial is being done in 4 or 5 centers across India. And again, this is a very similar design where we give heart-friendly yoga package to these patients and compare them against usual care. In addition, we are also building capacity of yoga practitioners, yoga trainers, and others. So we have embarked on a certificate course on yoga care for patients of heart attack amongst BNYS graduates. The first batch is actually completing today. There's a research forum for young yoga researchers starting in August 2025. My colleague, Dr. Chandrasekharan, who's here, will be leading this, and there will be short workshops on specialized techniques. But there are some unaddressed questions which many of you can think of and apply for grants and do it. I'm just giving you 4 examples here. One is yoga in hypertension. You can do what is called as ambulatory blood pressure and look at what are called dipping phenomenon, which increases the risk of stroke. We can look at the scale of yoga in health promotion. Then we can look at the role of technology. Can we use simple apps to improve yoga practice amongst the population? And we can do large-scale implementation science. And my colleague, again, Chandrasekharan, is doing this in the state of Tamil Nadu. But finally, we need to translate into policy, and it has to form part of the guidelines of any cardiovascular care. But what we need to do when we are writing our protocol, we need to look at the style of yoga, dose and delivery of yoga, components of the yoga intervention, and specific class sequences. And we need to deal with modifications, selection of instructors, facilitation of home-based practice, and measurement of intervention fidelity of yoga. So to conclude, yoga care has the potential, huge potential, to reduce unmet care of cardiac rehabilitation in India. It can add years to life in patients with cardiovascular, both years to life as well as life to years in patients with cardiovascular disease. And as my mentor, Professor Reddy, says, science is reductionist. When we learn science, we talk about the body, then we talk about the tissues, then we talk about the organs, then we go into the cells, and from the cells we get into the intracellular structures such as nucleus, mitochondria, and others. And from that we develop many drugs and many new things, but ultimately a patient is a whole human being. So our solution has to be holistic, and I believe yoga is going to be the best holistic solution for managing patients with disease. So thank you very much for hearing me out.
Thank you, Prabhakaran, for telling us that yoga could be extremely beneficial in prevention of all lifestyle diseases, especially cardiovascular disease. And thank you for sharing two of the largest studies which are done in the world, that is cardiac rehabilitation after myocardial infarction and now heart failure, which is going to be completed now. I think this is a quality research which has not been done in India earlier, and it is getting recognition all over the world. So for the youngsters, I would suggest that studies like what Prabhakar is doing should be done so that this yoga can come into the scientific backing very soon. Thank you very much. I think we will move into the next, and we have another brilliant cardiologist, Dr. Gautam Sharma. He's also one of the very leading cardiologists of the country. He's professor of cardiology at All India Institute of Medical Sciences, again my student, and he's the one who is director of Integrative Medicine at All India Institute of Medical Sciences. I think it is his efforts which have made this integrative medicine for the first time in our country, in a premier institution. And he's done large number of studies, not only in cardiology, but other fields also. I think this type of integrative centers with the centers of excellence is needed so that we can do our research. So I will hand it over to Dr. Gautam Sharma to give his presentation. Yeah, thank you so much, sir. Always a pleasure to be introduced by your teacher, and so he was Dr. Manchanta was my teacher when I was doing my cardiology, and now he's my mentor in integrative medicine. Thank you for the kind words, sir. All right, so what I've been asked to do is to present a few studies, just to give a glimpse of what is the research that we are doing pertaining to cardiology. So as sir said that we are doing a lot of research in practically all fields of medicine, but here I'm going to present 4 or 5 studies related to integrative cardiology. All right, so I think most of us from the world of yoga science already know this, that the autonomic imbalance has a great impact on cardiovascular disease. And this imbalance can be because of many reasons, but stress is one of them. And there are several ways in which modern science is trying to address this, but these ways are invasive, they have a steep learning curve, and they are fraught with great risks and also very expensive. So so what yoga offers, Dr. Prabhakar has already alluded to this, we all know, but the point that I want to make here is that yoga is probably an excellent means of non-invasive neuromodulatory intervention because of meditation, slow breathing, and because of relaxation techniques that there are in this in yoga. It offers stress reduction and smoothing out of autonomic imbalance. So we at the Center for Integrative Medicine and Research at AIIMS are doing research in integrative medicine, as you know, and there have been several studies that we've already published. In fact, we've published 28 papers already, and there are a lot of trials which are underway. And as I pointed out, that we are collaborating with 24 specialities and disciplines such as neurology, gastroenterology, psychiatry, etc. But here I'm going to talk only about cardiology. So this is the first study that we did. You know, it was a small study, a pilot study. We just wanted to see how does Bhramari Pranayam affect the autonomic nervous system. This was a single session, small RCT. But what we found here was that there was a significant augmentation in the parasympathetic tone. And we used Holter's and HRV monitoring to assess that. So that was encouraging. Going further, this is a study that we published a couple of years back. This is called the Live Yoga study. This is a study done in patients who suffer from fainting episodes. And as you can see, this is a famous picture from the Buckingham Palace, where the guards quite often have this
fainting episodes, and they make for good reels on the social media, etc. But it's a big problem because modern medicine doesn't really have a cure for vasovagal syncope. And we also know that autonomic imbalance and stress play a role in these patients. So we thought, why not we use a specially designed yoga protocol to address this issue? And these are the results. After 1 year of practice in this randomized controlled trial, there was a significant reduction in the number of episodes of pre-syncope and syncope in patients who practiced yoga. Not only that, there was a significant reduction in the quality of life, improvement in the quality of life domains in patients who practiced yoga. So this study was published in the Journal of American College of Cardiology. It was presented in the ACC conference, and it was a major success in the sense that the Western world of cardiology accepted research in yoga. We have subsequently done a meta-analysis looking at all the studies of yoga in this particular condition, and as you can see from the forest plot, that all the studies are pointing towards one direction, which is an improvement, a clinical improvement with yoga. So this is the postulated mechanistic explanation. We postulated that yoga acts in many ways. So in vasovagal syncope, peripheral pooling of blood is very important as a trigger for the whole cascade. And here with yoga, you can enhance the muscle tone, you can enhance the vasomotor tone and prevent the pooling. Yoga breathing and relaxation techniques can inhibit the sympathetic drive, the surge that is again an important part of this reflex. There are central triggers which are calmed by meditation and mindfulness. And overall, by the balancing of the autonomic tone and enhancing the muscular and vasomotor tone, we thought that yoga can help in aborting an episode of vasovagal syncope, and that is what our trial showed. Another condition which is very important for us as cardiologists is this. This is a population of patients who have had either an episode of sudden cardiac death that has been aborted or are predisposed to sudden cardiac death. And we implant these special devices called implantable cardioverter defibrillators, as you can see here, in such patients, and these devices are life-saving, and they prevent sudden death by terminating dangerous arrhythmias by giving a small shock, and other methods as well. But the problem with this device is that it creates a lot of anxiety in these patients, and as you know, anxiety, again, stress and autonomic imbalance leads to arrhythmias. So we hypothesize that perhaps if we make again a special कि वो यहाँ पर आए हमारे लिए population, है ये we might prevent the arrhythmic burden in such माइक patients हैंड ओवर करना and also reduce the psychological burden. सर आप So this is a trial that I did with my colleague Dr. Naik in my department, and so we designed this over the past 10 years. So it was a pilot study. We took 100 patients and we divided Release of e-book highlighting the IDY celebration over the last decade. Objectives are A book listed on there, Bharatiya and the results showed Riksha that there was Vaibhavam, improvement in quality of life, and a report of reduction in Pehle anxiety and India. depression. And These that patients. yoga is There an was important tool a lesser for number both of physical, events, but mental, because and of spiritual the growth. underpowering of the study. By now, the world has realized statistical that the health of humans So cardiac rehab, Professor just talked about this landmark trial. So we started this study almost around the same time, perhaps in fact a little earlier. But this is cardiac rehabilitation in patients who've undergone coronary intervention. And why did we choose yoga as a means of
of cardiac rehabilitation that I think Dr. Prabhakar has already told you that yoga fulfills all the goals. Our next guest, Shri Chidanand Saraswati Ji Maharaj, Spiritual Head, Parmarth Niketan Ashram, to address the gathering. So this was a Yogi CID trial, and Dr. Shriloy is here. He was a co-investigator in this study, and what we thought that we will and we will give them a specially designed yoga module, and then we'll see the effect on exercise duration and the quality of life. बहुत धन्यवाद है जो सबको साथ लेके चले, वही तो भारत है। और उस भारत के लिए योग और ध्यान जिसने भीतर की दृष्टि दी, अंदर की दृष्टि दी, भीतर नहीं संभला, आज सबसे जुड़ गए लेकिन भीतर से कट गए। लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन। उस कनेक्शन को अगर कोई दे सकता है, हाँ, योग आज महाराज जी का जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती के नाम और एक पेड़ अपने नाम, कुछ तो करें हम लोग। अगर आपने ये काम किया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। धरती भी हरी भरी रहेगी, जीवन भी हरा भरा रहेगा, और हम सब मिलकर पूरे विश्व के लिए एक नया भारत, एक नया विश्व दे सकते हैं। भारत माता की जय, वंदे। धन्यवाद। This is looking at another very important set that you see in coronary artery disease patients, which is sleep disturbance. These patients suffer from sleep disorders, and we thought that let us use Yoga Nidra and see whether it affects the sleep disorder in these patients of coronary artery disease. And we just completed this study, and so this is the introduction that I talked about. रहेगा और हम सब मिलकर पूरे विश्व के लिए एक नया भारत, एक नया विश्व दे सकते हैं। भारत माता की जय, वंदे। धन्यवाद। This is looking at another very important set that you see in coronary artery disease patients, which is sleep disturbance. These patients suffer from sleep disorders, and we thought that let us use Yoga Nidra and see whether it affects the sleep disorder in these patients of coronary artery disease. And we just completed this study, and so this is the introduction that I talked about. We wanted to see whether Yoga Nidra can improve the sleep efficiency in these patients. This was the methodology, and so these are the results. Practically all the aspects of sleep which were measured by an actigraphy watch. This is a very objective method of assessing sleep efficiency. So all the patients were given an actigraphy watch that they wore, and we assessed them from time to time, and the result shows that there was an improvement in sleep efficiency, sleep latency, and the amount of time they slept in these patients, and correspondingly there was an improvement in quality of life. So I think I'm almost at the end, sir, of my talk, and this is the IDY 2024 at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where more than 3,500 participants enthusiastically performed the common yoga protocol. So thank you for your kind attention, and I'm happy to answer questions if any. I think we will have questions later. Thank you very much, Gautam, for your excellent talk. You have told us that so many fields yoga can be used and all. The field is open for yoga research, but you have to do quality research, as Dr. Prabhakar has told you. A large number of studies are being done at All India Institute in yoga, in various other specialties also, especially
non-communicable diseases like he has told, heart diseases, high blood pressure is there, diabetes is there, bronchial asthma is there, even constipation and irritable bowel. All those studies are being done, and I think the field is still open because it has a scientific basis. He says autonomic nervous system is altered by this, and this is a great thing. That's why people who fall down unconscious, called vasovagal, can improve. Patients who have arrhythmias, those who are getting missing beats, and they get much less, and so on. So I think the field is open. Thank you very much for your large number of studies that you are doing. Because of short of time, I think we will not have any questions. And our next speaker is, again, one of the leading researchers in yoga in the country, Dr. Anand Balyogi Bhavnani. I know him for the last 40 years, and I think he is one person who has done the largest number of research in the field of yoga. And he is at present the director of Institute of, I don't know, the salutogenesis and complementary medicine. And I think he is very unique because he has done the huge amount of research in the field of yoga, and he's going to share some of his experiences with us. Dr. Fal. Thank you so much, sir. I'm holding a hand mic because I'm going to be moving over there in a few moments. But before that, I think it is very essential to remind ourselves that we are the descendants of the great rishis of this culture, and Pravaram Muni is Maharishi Patanjali. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalivarnatosmi. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. With respects to the chair and the other speakers and those eminent personalities in the audience today, offline and online, we are talking about non-communicable diseases and NCD. We all know non-communicable disease. But may I suggest another expansion of NCD? It is a no communication disease. We have stopped communicating with ourselves. Because we are not communicating with ourselves, we have moved from ease to disease, from sukha to dukkha. And this is why whenever you do studies in yoga, I will tell you something, stress levels will always come down irrespective of your protocol. Because yoga as a lifestyle, yoga as an integrated practice, changes your perception of stress itself. We have a scale called PSS, Perceived Stress Scale. Every study will show it comes down because the moment you develop a yoga bhavana, you will look at life in a different way. The molehill becomes a mountain when you are stressed. The mountain becomes a molehill when you are de-stressed. And yoga is the best non-pharmacological method of stress reduction. All of us doctors, we tell our patient, please relax. But we are always scared that the patient shouldn't ask us, sir, how to relax. Because modern medicine doesn't have non-pharmacological methodologies of relaxation. Which is why the study in the end, the cadet study that sir was presenting, shows Yoga Nidra has such an impact because the moment you learn self-directed relaxation, you have empowered yourself to move from dukkha to sukha. Before we go forward, I would like to ask you all to stand up. That's why I have the hand mic. Please stand up for one moment. Sitting is the new smoking, okay? And I'm just going to ask you to do something. Please bear with me, okay? Yoga is about doing, not just talking. Let's start to shake our right hand. Can we shake our right hand? Right side. I want to check how many of you are aware of right and left. Can we shake our left hand? Subodhji, left hand. Right hand. Left hand. Now both hands. As fast as possible. Fast, 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 fast. Now shake down, 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 down. Up to your right. Right, right. See, awareness. Yoga is awareness.
left, up, down, up. Now as fast as possible. Shake, 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 shake. Catch hold the ball. All your tension, hold it tight. Take in a deep breath. And throw it out. Now you can sit down. Immediately you feel better. You all look so depressed. I thought you need to be sent to AIMS to the psychiatry department for antidepressant. Instead, what happened? You brought your body, your mind together with your breath. How do you link your body and mind? Annamaya kosha and Manomaya kosha. What lies in between? Pranamaya kosha. How do you access the Pranamaya kosha? Pranayama. The moment you move and you breathe, and you do it mindfully, you have moved from dukkha to sukha. The biggest issue behind all non-communicable diseases is stress. And it is not just the acute stress, as all our doctors will say. Acute stress helps you save your life. It is the chronic stress with the cortisol overload that destroys every cell in your body. It doesn't matter whether it is your kidneys, your heart, your brain, or your nervous system. So if you have that chronic stress, what do you need to do? You need to change your attitude. You cannot change the stressor. If you can change the stressor, please do so. If your stressor is your husband or wife, if your stressor is your job, if your stressor is your boss or your subordinate, then what do? You cannot change them. But what can you change? You can change your attitude towards them. And that is the last and final freedom we have. The power to choose the attitude towards whatever happens to us in life. You know, if you think of a forest, imagine there's a huge forest and it's filled with thorns. Either you can choose to spend your whole life taking one thorn after one thorn after one thorn, documented with the double-blind clinical trial if you want, or you can choose to wear a nice pair of slippers and walk through the thorns. Yoga is that beautiful pair of slippers that enables you to walk over that forest of thorns and get your karma worked out by fulfilling your dharma. And this is why the change of perspective, rather than talking about me all the time, can it be from me, put M-E in Shirasasana. M becomes W. Me becomes we when you do Shirasasana. You have changed your perspective. The whole reptilian complex, your brain stem is only working on survival. Abhinivesha, Klesha in yoga. You want to switch from this automatic breathing. Sir has talked about autonomic nervous system as being the prime pathology. Well, how do you change your autonomic nervous system? They say, oh, you cannot change it. You can change it by the way you breathe. The moment I switch from automatic breathing, which is brainstem governed, to prefrontal cortex, choice-based breathing, I have changed my whole physiology. I've changed my whole psychology. Because I have decided I will breathe for 6 counts, I will breathe out for 12 counts. I will breathe through my right nostril or left nostril or through my mouth and out my nose or in my nose and out my mouth.
The moment you make a choice, you have empowered your prefrontal cortex. Let's all do this. Prefrontal cortex, prefrontal cortex. That is the power of choice. And the power of choice, mind you, is the superpower of being human. As a human being, we are endowed with the power of choice to choose how we look at life. And that is where stress, which can be distress, which is the problem, when you change your attitude to the problem, that distress becomes eustress. So the bad stress, which is pathogenic, moves into eustress, which is salutogenic, which is the name of my institute, salutogenesis, that focuses on wellness rather than illness. You move from the me to the we. You move from what in stress, chronic stress, we have allostatic load. You move from the allostatic load and you come back to homeostatic balance. Now this is all sounding good. Let us do one more practice which will enable that to happen. Anxiety and stress are the major driving force behind all NCDs. Where are anxiety stored? 3 places. This is the anxiety of performance. Can I perform well or not? This is the anxiety of relationship. This is the anxiety of the ego. I am the professor, I am the director, I am the president, I am the chief minister, whatever, it's up here. How do you address it? This stress, you make a beautiful sound. Ha, 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 ha. Okay? We are going to do it. Here you go. Ho, 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 ho. Up here. He. Okay? We are going to do this through this nada. Bhavana Shuddhi. You change your perspective, your attitude. And it is a kriya, it is an active principle. Can we all again stand up again? Will you do that? Thank you. Now both hands, I'm holding the mic with one hand, so I'm doing it both hands on your abdomen. Ha, 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 ha. Swami Ramdev was correct. Half of you are still in Yoga Nidra. Come out of Sushupti. Come to Jagrat. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. He. He. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. He. Now remember this brainstem. Me. And both hands. Me. And the prefrontal cortex, buddhi. Di. Me. Di. And we now throw it all out and we go. Go. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. He. Me. Di. Go. How do you feel now? Happy? Thank you so much for this wonderful opportunity. Live yoga, be yoga, and manifest the greatness of our beautiful culture. Thank you so much. Thank you, Dr. Bhavanani, for telling us that stress is the main feature behind many diseases that we have, and the practical tips that you told everybody, I'm sure they'll remember it. There are studies done by him which show that it relieves stress also. Thank you very much. I think our 2 speakers have to leave at 1:30. And if there are any questions to Dr. Prabhakar or Dr. Gautam Sharma, anybody like to ask 1 or 2 questions? Because they have to leave. They have to go somewhere else. Yes. 1 or 2 questions only. We don't have much time. Right. In the current heart failure study, we are looking at heart rate variability. I think Dr. Sharma has also looked at heart rate variability. We take your point.
that we will do qualitative research, and it's important to understand the perspectives of people. Any other? Yeah, please. Hello. Sir, I have question about scope of doing just research. 1 minute, Dr. Gautam. Which question? So, are you talking to me as a cardiologist or as a researcher in yoga? No, I'm not discounting science, but if you were asking me about the yoga techniques that you're saying, so slow breathing is really important, and the other thing is meditation. These are the two mechanisms with which you can smoothen out stress and your autonomic imbalance. Whether you do it by a simple technique like Yoga Nidra, that's up to you, but these are the two techniques that you should incorporate in your yoga practice daily. I think what Dr. Sharma said is right. You do yoga for 10 minutes, but I think you need to do additional things. And those additional things are that you need to be physically active. The recommendation is that you do half an hour of brisk walking, at least 5 days a week. And but now the recommendation is you can do it anytime. You do it 10 minutes, break it out into 3 or 4 parts, 5 minutes, 10 minutes, whenever you get time, you do that. In addition, you do some stretching exercises to increase your muscle tone. And that's where the yogic asanas will really work. Yoga is considered calorie neutral. It doesn't actually burn calories. It's neutral. But it's very important to increase the muscle tone. It will decrease your insulin resistance. So you need to do that, and you need to do the breathing exercises as well as yoga nidra. Well, I have also a cardiologist I can add up here. I ask them to do yoga because heart disease is because of weakness of mind. I ask my patients, why don't you exercise? They say, doctor, I want get up in the morning, I want to go, but mind says, don't go today. You had a late night. So why, mind is weak. I go to a party, I know this rasgulla is bad, but my mind says, take it today. So the moment I think they do yoga, they become master of their own mind. And they start taking care of diet, exercise, they stop smoking. And then some exercises are needed, as they said, stretching and all that thing. So I tell them only 10 minutes, do yoga, especially breathing and meditation. And once the mind becomes strong, everything else becomes normal then. Everybody knows exercise is good, but who does it? Everybody knows this junk food is bad, but who controls it? So if you are the master of your mind, if your mind is strong, you will not get these diseases. I have a firm belief in this. I have been doing research myself. Okay, I think, is there anything else? Sir, one last question. Yeah, sir, please. My question is with Dr. Prabhakaran, especially because he is representing the Integrative Medicine Department. And all other you can also respond, because question is not about the research. It is about the possibility of research in your institute by ordinary yoga therapists and yoga experts who may not have allopathic or Ayurvedic background degree. So integrative departmental, interdepartmental research by student of yoga who does not have allopathic or Ayurvedic degree, can they do some research project in your institute, and can it be also made part of PhD projects or not? Thanks. Right. Our team is interdisciplinary, and we believe in the philosophy of multidisciplinary, but I believe that people should have some background. I mean, not necessarily a medical graduate or not necessarily Ayush graduate, but some kind of understanding of the science behind everything, maybe a 12th pass student. In fact, we are doing many trials across the country to improve care of hypertension, care of diabetes, using what is called as task shifting. We use community health workers. We also use patients and train them. So once they receive the training, they can actually participate. But for PhD programs, they require the basic qualification. They have to be masters. Without that, you can't get a PhD.
I think we thank both the speakers, and they have to leave for some urgent work. I think now we move on to the other part. And this is from United States. Now the international part. You want a photograph? Okay, before you leave. Let's give a big round of applause to our speakers. Show some love, guys. Thank you so much, sir. Just 1 minute. The memento has to be. We are felicitating our guests, our speakers with memento. Thank you so much, sir, for sharing the knowledge, the wisdom, and letting us know about some good tips and practices from the world of yoga to save our heart. वो कहते हैं ना, दिल दा मामला है, तो दिल की हर एक बात को हमारे डॉक्टर्स ने बहुत क्लियरली, साफ शब्दों में, इजी भाषा में हमें बताया हाउ टू टेक केयर ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ योगा. मेडिकल साइंस को ऑल्टरनेटिव थेरेपी के साथ जोड़कर लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाकर हम अपने हृदय की जीवन को और बढ़ा सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं. थैंक यू सो मच सर, हमें बताने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए. Now we have the international speakers, and we are grateful to all the speakers who have joined us from United States. The time there is, I think, in the morning, 3 o'clock or so. I'm grateful to all of them to join us, take their time. And I would like to invite Dr. Lorenzo Cohen from United States. He's the Director of Integrative Medicine in United States. He's been very active in research. He has come to India many times. I have met him, and he's one of those persons who is dedicated to research in various fields of medicine. So, Dr. Cohen, please. Am I audible? Yes, I can see you. Yes. Lorenzo, please start. Sorry for this odd time. You're not audible. Something has to be done with the mic. The voice is not coming. It's something at your end. Oh, yes, we can hear you now. Can you hear me now? Yeah, we can hear you very well, loud and clear. Please continue. Great, thank you, thank you. So good afternoon, everybody. It is an honor to be welcomed to this wonderful day celebrating yoga, both from a scientific perspective and from the cultural perspective. I'm pleased that for me at the moment, I am in Central European time, so it is a beautiful sunny morning, and I was able to get a full night's sleep, which was nice. The topic of course, non-communicable diseases is so important in our world right now.
because most importantly, we know how to prevent these diseases, and we know how to treat the majority of them effectively if we were to combine conventional medicine with lifestyle medicine. And of course, that's where yoga comes in. I'm going to share some slides. I'm not going to go into too much data because I know we don't have a lot of time today. But I'm going to talk specifically about yoga as a comprehensive way of life to reduce and control cancer. So MD Anderson is one of the largest cancer centers in the world, and I've been doing research there now for almost 30 years. I put together a lot of the research in and around lifestyle and cancer prevention and cancer control in this book called Anti-Cancer Living that I wrote in collaboration with my wife Alison Jeffries, who's also a wellness coach. I believe this edition that you see pictured here on the top left of the smaller images is the one that's बहुत बहुत धन्यवाद श्री चिदानंद सरस्वती महाराज जी का, जिन्होंने युद्ध इज नॉट द वे बट योगा इज द वे का नारा दिया, पीस इज द वे विच इज पैरामाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती हंसा जी योगेंद्र, जो हेड हैं द योगा इंस्टीट्यूट एंड प्रेसिडेंट इंडियन योगा एसोसिएशन के। मैं चाहूंगी कि वो आए और दो शब्द हमसे साझा करें। Cancer is being diagnosed at really epidemic proportions, in particular in younger and younger individuals. Cancer actually has surpassed cardiovascular disease as the #1 cause of death for individuals between 65 and 80. And that number, age group is going down and down. Here you see an example that is most apparent in colorectal cancer, where there's an increase in incidence in those under the age of 50, including an increase in mortality, yet we see a decrease in age over 65. Now, when we look to the American Association for Cancer Research and other organizations espouse these same reasons. Oh, here's what this looks like over time, right? I mean, it's literally unprecedented. And you could layer over this breast cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, liver cancer, head and neck cancer. And the reasons are here. These are our lifestyle reasons. In terms of unhealthy diet, excessive weight, alcohol consumption, sedentary behaviors, inappropriate use of antibiotics, alcohol, and the exposure we at an individual level have a harder time controlling of all these chemicals in the environment. हमारे सारे योगा एंथुसियास्ट को बात यही है कि योग, जैसे शेखावत जी ने कहा, योग करने का विषय नहीं है, योग को अपने जीवन में आत्मसात करने का विषय है। योग में जीवन जीना है। In the United States, most recently, red dye को अपने जीवन में आत्मसात food products we've known for decades. शेखावत जी ने कहा, योग कर yet the industry has been able to run amok, exposing us to these substances. So more control is needed in terms of regulation, and this could go the same if we start looking at the food industry. And I heard a previous speaker talk about the 3 white evils that are not controlled within what we're exposed to in terms of what we eat. Taking this a bit further, so there's a big focus on physical activity, diet, and the environment, but there's not a lot of talk often about important concepts like love and support. बात यही है कि योग, जैसे शेखावत जी ने कहा, योग करने का विषय नहीं है, योग को अपने जीवन अपने आप करें, यानी कोई भी कार्य करें सोच के करें, यूं ही नहीं करना, लग से ज्यादा ये हर क्षण योग में। तालियां सेक्रेटरी का आपने करुणा, हर क्षण योगमय हो जाए तो बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। बस यही कहना था।
नमस्कार. And taking into account not just movement and relaxation, but how we interact with our world. Now, this was a study that was just published in the New England Journal of Medicine 2 weeks ago, presented the American American Society of Clinical Oncology, ASCO, the largest cancer organization in the world, looking at the link between exercise and cancer outcomes. Most of the research to date has shown that people who exercise more, who are more active during cancer treatment, live longer. But those are epidemiological studies. It's much harder to do formal clinical trials. Well, this was a formal clinical trial, over 800 colorectal cancer survivors who just participated actually in relatively light exercise, a form of exercise that would be equivalent to doing a daily yoga practice. And here we see not only disease-free survival, that means how long you live without a recurrence of disease, but also overall survival. And these differences are actually quite similar to what you would see in the benefits of conventional drug outcomes. So this is actually one of the first times ever that we've seen in a formal clinical trial the benefits of exercise on survival. This is a paper that we published a few years ago in the journal Science, and there was a presentation at ASCO on an RCT from this same scientific mechanism. But we were very interested in a large cohort of advanced melanoma patients to see what the influence was of diet, and a particular constituent of diet, which was fiber. And the only way to get fiber, of course, is from the plant-based world. So the closer people are approximating a vegetarian diet, which is, of course, the primary diet of those in India, we believe the better the health of the individual, in particular cancer outcomes. All this data was actually recapitulated in animal studies, multiple animal studies across multiple labs in the United States, and that's why we got to publish this in the highest impact journal, Science. What we see here is that the cancer patients who are eating a diet that was classified as a sufficient amount of fiber had much better survival probability and actually response to immunotherapy. And in fact, somewhat surprising to us, we found that those who had sufficient fiber but were taking an over-the-counter probiotic, it actually decreased the beneficial effects of that fiber diet. So the only way that individuals had improved survival is just consuming a higher fiber diet and not taking any kind of supplement. At this most recent ASCO just 10 days ago, Jennifer McQuaid, who is also part of this study, presented a formalized RCT feeding study. So patients for 2 months only ate the food that we gave them, which was in one group a high fiber diet or a not low fiber diet, but just a normal diet. Those who had the higher fiber diet had a much higher probability of responding to immunotherapy. Now we're going to be tracking those patients over time. So what's important to know is that each of the mix of 6, love and support, stress, sleep, diet, exercise, and exposure to environmental toxins, influence key cancer hallmarks, and it can do so in a unhealthy way, or ideally, we counteract these cancer hallmarks. These are the biological processes that are necessary to allow that mutated cell in our bodies to grow and thrive. And so we know that, for example, stress is immunosuppressive, reducing the immune system, which allows the cancer cells to avoid immune destruction. We know that chronic stress promotes inflammation. Cancer thrives in an inflammatory environment. We know that diet, as I just described to you, will modify the microbiome in the body and allow
us to be more resistant to cancer growth. And the list goes on. Diet, exercise, and stress in particular influence all the cancer hallmarks. Sleep will influence a number of them, but not necessarily all of them. Similar for love and support. So those three pillars, which are key factors in a yogic lifestyle, can be harnessed. Stress will literally get into the tumor microenvironment and make it more hospitable to cancer growth. Again, allowing the cancer cells to avoid immune destruction. There's an increase in inflammation. There's an increase in the vascularization of the tumor if people are experiencing chronic stress. And of course, we know how to counteract this at a behavioral level. We, for years, have been doing collaborative research with the Vyasa group outside of Bangalore, clinical trials both in India as well as clinical trials at MD Anderson. I believe you're going to also be hearing shortly from Satbir Khalsa, and together with others, we've now published a second edition of this book, The Principles and Practice of Yoga in Healthcare, which puts together all of the research in and around disease and yoga studies for improving outcomes. The evidence base for the benefits of yoga in cancer is so robust and large that we actually needed to have two chapters, one for yoga patients undergoing cancer treatment, as well as one for yoga therapy for cancer survivors. Each of these chapters outlines in detail all of the clinical trials that are put together to support the recommendations. The Society for Integrative Oncology, which I helped to form over 20 years ago, in collaboration with ASCO and also the National Comprehensive Cancer Network, developed guidelines for the use of integrative medicine in cancer care. And we recently published a paper in Nature Reviews Cancer that put together all of these guidelines in and around the use of integrative modalities for treating cancer-related symptoms that you see listed there on the left side: pain, arthralgias, fatigue, anxiety, depression, sleep, nausea, cognitive dysfunction, hot flashes, night sweats. These are all common symptoms that cancer patients in the world, but also all other non-communicable diseases. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Lorenzo, for sharing your huge experience
on the role of yoga in cancer. You have really worked for a long, long time. I know that you are in collaboration with the Swasa also in Bangalore, and I think your point is very well taken, that it should be a part of the usual therapy of all cancer patients. And I would agree with you, if somebody follows the yogic lifestyle, you said high fiber diet, sattvic diet, what we call, could prevent heart disease. And I know people have died because of stress. You see, the moment they have cancer, they have so much of stress that many people have died of stress because of stress-related arrhythmias as a heart patient and all. So I think your point is very well taken, that it has a lot of role in the field of cancer. We are not routinely using it, but it should be routinely used, because not only in patients who are getting chemotherapy, it's very useful, but those in survivor also, you have shown very good data that even survival may be better and all. And most important is, I think, quality of life is much better of these cancer patients, because they are so scared all the time. They have so much of stress. I deal with some of these patients as a clinician. So I think your point is very well taken. Thank you very much for your sharing your huge data with us. Thank you. And you are in a good place now. I'm in Europe. I'm glad I didn't disturb you at the middle of the night. If you are in the United States, it will be difficult. Okay, thank you. I think we move on to the next person, who is another Dr. Satbir Singh Khalsa from the United States again. He is a member of the faculty at the prestigious Harvard Medical School in Boston. Harvard Medical School is one of the best in the world, and he has been working there as associate professor of medicine, and also a researcher in Kundalini Research Foundation. I think he is one person who is devoted to the yoga research as far as the mental health is concerned. I think his work on mental health in yoga is outstanding, and he has worked in so many other fields and all. He's been coming to India very frequently. I meet him. Very simple. He's himself a yogi, and he's feeling a yogic lifestyle. So is his family and all. And I think he's done tremendous work in the field of yoga research. And he was the editor-in-chief of the first book on yoga therapy, that is Principles and Practice of, I think, yogic practices. The second edition is being edited by Lorenzo, as you heard just now. I think anybody who wants to know about the scientific aspects of yoga must read this book, Principles and Practices of Yoga Therapy, which was written by him, and now the second edition is there. So Dr. Satbir is going to share his large experience with us. Dr. Satbir, please. Am I audible, Satbir Singh? Yes, over to you, Dr. Satbir Khalsa. Slides are visible, but hello. Satbir, are you able to listen to us? I don't think we have. It's a very odd time in the United States. If he's in US, it's about, I think, 3 o'clock in the morning. Is he available, the organizers, please? Diet and weight management, although most of my work in NCDs has been in mental health. I would like to start with talking about the risk factors for NCDs. And these are physical inactivity, unhealthy diet, unhealthy behaviors, and what is not often recognized when these risk factors, these modifiable risk factors that are described, is the epidemic of chronic stress. Now, 3 of these risk factors, physical inactivity, unhealthy diet, and unhealthy behaviors, are behavioral factors. And we know that
those behavioral factors are high in the world and the general population. And this paper is one example showing NCD risk factors in India, in which we can see here 95 to 99% of participants in this survey get less than 5 servings of fruit and vegetables. There's high levels of physical inactivity and raised salt intake, all of which are risk factors for NCDs in general, but of course, risk factors for weight management and obesity. And what we also know is that changing these behaviors is very difficult. So this is a paper that discussed this aspect of behavior change, because if you want to change the underlying causes of a disease, which is behavioral, you need to change those behaviors. And yet this paper concluded that patterns of behavior change following diagnosis indicate that the vast majority of individuals diagnosed with a new chronic condition did not adopt healthier behaviors. And so this is from my yoga research colleagues who have also talked about this idea of lifestyle behavior change. Individuals generally recognize the need for behavior change, but are still unable to change their behavior. Thus, it is necessary to empower individuals to take an active role in self-regulating their health behaviors on an ongoing basis to improve health outcomes. Unfortunately, in our modern medical system, it's an acute care model. The focus is not on underlying cause, but on symptoms. It's invested in pharmaceutical, surgical, and technological strategies rather than successful long-term behavioral interventions, and prevention and health maintenance is not dominant. So as a consequence, we are not successfully coping with these 3 behavioral risk factors. The chronic stress risk factor, as I mentioned, is a global epidemic. Sorry to interrupt you. We are not able to see your slides. Yes. Are they changing? The slides we are not able to see. We can hear you very well. If you can see that the slides change there. We are not able to see your slides. It's not moving at all. Only the title. First slide. Yeah. Now it's better. Sorry, these are some technological problems. If you have to do a hybrid conference, these problems do occur sometimes. Your ma'am is there? She's on the call, no? She's waiting. Done. Next will be ma'am. So, Satyesh. So, or else now can we tell ma'am to present? Shall we tell ma'am? Oh, okay. Please. Yeah. Speaker, meanwhile, yeah. Ma'am is on the call. Well, I think till the time we get reconnected to him, I'd like to invite the last speaker, Dr. Meenu Singh. He's Director of All India Institute of Medical Sciences at Rishikesh. Also interested, she's a pediatrician, and she's going to talk about her experience of yoga, maybe in the pediatric age group. Dr. Meenu. Dr. Meenu Singh here, please.
she is also online. Okay. Well, before they join, you see, I can talk for little comments, you see. As you heard that non-communicable diseases are increasing markedly, and this is because of unhealthy lifestyle. And yoga, being a healthy lifestyle, I have called it in my publications as a lifestyle polypill, because yoga is a lifestyle in which you have diet control, you know, sattvic diet, which is good for the heart, for the cancer, etc. It also physical exercise is a part of it. Yoga is many asanas are equal to moderate exercise. Thirdly, there is stress control. There is no other medicine which can really do that. And fourthly, there is avoidance of tobacco and alcohol. These four factors, if they can be controlled, I think non-communicable disease can be controlled. And yoga is ideally suited for that. So when I tell my patients do yoga, I tell them there are four components of yoga. Please do all these four. It's physical, mental, emotional, and spiritual well-being is yoga. In physical component, everybody knows exercise, diet, and no alcohol and tobacco. The mental part is, yes. Yes, have you got... could you make it full screen and the slides, if they can change? Dr. Satbir, am I audible? Yes, just one moment. Yeah. If you can make it full screen and then try to change the slides. Okay, am I audible and can you see my slide? Yeah, your first slide is seen. Can you change over to the next one, please? Okay. Okay, shall I begin? Yeah, if you can change the slide. Slide is still, the first slide is coming. We are not seeing any other slide. If you can go to the second or whatever, then we know it's moving. On the left-hand side, if you can... Okay. Yeah. I have changed slides. Do you see the second slide? It still doesn't change here. We see your slides on the left side of the screen, but... They're not changing. Perhaps I can just give my talk audibly then without Sir, please slides. make it into full screen. It is not yet into the full screen. Make your PowerPoint into full screen, sir. Okay. Can you see the full screen now? No, not yet, sir. We are waiting. Actually, your internet is not stable. This may be the problem. Yes, why? Yeah, sir. You are because the connectivity is very. Why the screen is not showing not stable. Or else it's. I can perhaps just give my talk audibly without slides. Yeah, sir. Because Or if you want to give the message. Yeah, you can give a without, summary of message, yes, sir, rather summary than of the a message. presentation. We'll very keen to listen to you. We have disturbed you in the middle of the night, I hope. Please give us the message, whatever. Yeah, this is all right. Now we can see your slides. Everything is fine now. Risk factors we can see. Now you can continue. I think it's all right. Slides are moving. Okay. All right. So risk factors are four risk factors: activity, diabetes, and chronic stress. And we know that these first three are modifiable at high levels in the population. They are also high in India, as you can see from the survey study, high levels of we have low levels of vegetables, high low physical activity, high salt consumption. So risk factors are high not only
also true in India. ईश्वर है, This सत्य survey है, conducted in India, याद a करना third जरूरी है। of individuals have high levels of daily stress, and another third have moderate levels of daily stress. That's 2/3 of the population indicating high levels of continuing stress. And we know from yoga research that yoga, as it's practiced traditionally with its postures, breathing techniques, relaxation, and meditation, has improvements on many levels of psychophysiological functioning. It improves physical functioning in terms of fitness, flexibility. It improves stress regulation, particularly stress and emotion regulation. The meditative component is very effective in increasing mind-body awareness, also known as mindfulness, very important factor. And we also now have growing research on the efficacy of yoga in increasing secular spirituality. Now, these risk factors and the benefits of yoga match very well. So the fitness component of yoga can help address physical inactivity by giving individuals more confidence in their bodies and more ability to engage in physical activity. The self-regulation aspect, particularly of stress and emotion regulation, is very effective in managing chronic stress. The increase in mind-body awareness and mindfulness through the meditative component of yoga practice is now known to be able to change these modifiable risk factors of physical inactivity, unhealthy diet, and unhealthy behavior such as cigarette smoking and alcohol consumption. And the aspect of spirituality also is helpful in managing this worldview, this sense of materialistic goals in life, and thereby also improving chronic stress. So in fact, yoga is a very good fit for the risk factors for NCDs, whereas modern medicine has not been doing very well in treating these NCDs. So coming to some of the research evidence, this is a survey study we conducted in long-term yoga practitioners. And we found that 46% of yoga practitioners have no medications use whatsoever, and that is much higher in non-yoga practitioners. Furthermore, when we looked at medication use, especially medications related to weight management for diabetes, cholesterol, and high triglycerides, non-yoga practitioners had much higher use of these medications than did non-yoga practitioners. And a number of studies have really shown this relationship between long-term yoga practice and health. This was a study that looked at weight in terms of those that were yoga practitioners, those that were doing physical activity, and those that were in sedentary behavior. So in terms of normal weight, no surprise that the yoga and the physical activity individuals are more likely to have normal weight. However, when you look at the individuals who are overweight, in fact, the yoga is much superior to both the physical activity and sedentary behavior, suggesting that yoga may be uniquely positioned to be able to address the risk factors for weight gain and ultimately obesity. There are also now some growing number of trials, prospective trials, that are showing that yoga can increase the positive aspects of these negative risk factors. So, for example, in this study, they showed that a yoga intervention could increase intrinsic motivation for physical activity, thereby addressing this negative risk factor of low sedentary behavior, which contributes to weight gain. Another recent study has shown that actually applying yoga to patients who have problems with eating and are under chronic stress is showing efficacy. From this study, mindful yoga may promote intuitive eating and reduce internalized weight stigma among stressed adults with poor diet, and suggests that changes in these factors may co-occur over time. With poor diet, and suggests that changes in these factors may